So many technical glitches right at the beginning of the training session. So today's agenda is precisely that we're going to talk about the scope. What are the basics of instructions when instructors teach in online modality? How should they teach? What are the range of instructional possibilities? How should you prepare to teach successfully in the online modality? And then there are definitely many challenges on this road, and how should you prepare yourselves to encounter these challenges for ensuring effectiveness in your instructional approaches. And lastly, what are some of the possible solutions? How can you ensure success for online teaching? And now I'm sure that online teaching is not anything new or a novel idea anymore for any of us in the call. We have been teaching, and we have been applying different models of online teaching in the since the last 2 years. Since the COVID-19 pandemic had hit Pakistan, we were forced to explore these uncharted waters. And can you hear me? Yes, ma'am. Okay, all right. Uh, so the scope of online teaching can be divided into five overarching categories. The first is, what approach are you going to take? Are you going to take a self-paced learning approach where students have more autonomy? Do you create the learning package and offer it to the students in remote modality, and then just let them accomplish the learning objectives on their own? Or are you focusing on instructor led learning where your presence is mandatory? Now, within the instructor led learning as well, there are two different approaches, and we are going to talk about those in a minute. Now, there are certain different learning content and the types of content that instructors can use in online mode. One is simple learning resources. Those include the PDF files or the PowerPoint presentation. If you have created for your students, you can pass it on to them. You want them to read through something additional to their textbooks, that is simple learning resources. All of these are simple learning resources. Then you have interactive lessons. We talked about the amalgamation of learning management system plus PowerPoint presentations plus instructor videos or third party resources. All of these put together in one place that require students to take some action at the right time makes them interactive lessons. Then there are electronic simulations where you're showing some, the videos, or you're combining the 3D models of instruction with other simple learning resources. Those formulate your online lectures as electronic simulations. And lastly, there are job aids. These are resources that help the users, be it instructors or students, to understand how to operate and how to navigate through different applications and different online resources in the electronic or digitized mode. Uh, आपने अक्सर देखा होगा डिफरेंट पैकेजेस पे या डिफरेंट एप्लीकेशंस पे देयर इज ऑलवेज सेटिंग्स का एक साइन होता है, या आप उसको हाउ टू ऑपरेट दिस के कुछ मैनुअल्स होते हैं. ऑल ऑफ दिस type of instruction based categorizes as job aids. So these are four different types of online learning content that is available and that you can pick and choose from. Then you have relationship status. You remember अभी मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्टर लेड लर्निंग में भी दो कैटेगरीज होती हैं. ये वो दो कैटेगरीज हैं. The way you establish a relationship with your students. One is synchronous, like this. We are all in one call on one platform. I'm talking, you're listening. It's happening in real time. And the other is asynchronous. Let's say I have a video or this lecture recorded for your reference, and I float it out to you. But it's not essential for any of us to be present in the same or on the same platform at the same time. So these are your relationship
types that you may share with the students. It really depends on you. How do you want to carry out the lecture? What is the best mode of establishing the relationship with the students? But relationship is very important. You see, we are looking at all the different elements of teaching and learning in the same way as we have in the conventional setting. जब हम conventional setting में पढ़ाते हैं तो we have to decide an approach to teaching. Then we have to decide what sort of learning content are we going to teach the students, and then what sort of relationship would we have with the students. So we'll one by one we're looking at everything, and we are translating it into the online setting. Then you have possible instructional methods. After you decide your online learning approach, this is an other very important aspect to think about कि आपने किस किस्म की instructional methodologies को use करना है. Are you talking about passive instruction? This current training session is a perfect example of passive instruction. Reason being that the content is too much, and time is short. So you have to decide in your own context, in the given situation, the kind of content that you're covering, the learning outcomes that you have planned for the students, that what sort of instructional method are you going to use. Are you going to use the passive instruction model, or are you going to exposit the learning content and involve the students in a lot of interaction? Are you going to ask them to perform some hands-on activities and make your instruction more applied in nature rather than passive? Or lastly, if you have some collaboration planned for the students and you want to make it fall in the category of collaborative methods. So these are some possibilities for you, and within these overarching ideologies you can further explore, you can further experiment कि आपके possible instructional methodologies क्या होने चाहिए, suitable किस तरह से है, आपका relationship status के साथ कैसे jive करेंगे वो. So it's all overall, it's basically a creation of a plan. I would say it's a plan that you have to create, starting from the content, from your personal ideology of teaching, to what are your possibilities in the given point in time. Can you actually initiate a lot of hands-on activities? Do you have enough resources? Do your students, do they have access to different resources that you're going to teach with? All of this defines what will be your approach towards online teaching. And lastly, assessment has to be planned, and it should not be left on on spontaneous methods. You have to plan how are you going to assess the students. Now, when you're planning the assessment, it is very important that you look at the student learning outcomes. Assessment can be reflective, it can be open book exams. In our context, these two are most appropriate. There is a third category as well, which is proctored exams. But unfortunately, in Pakistan, we do not have enough resources to observe proctored examination. There are softwares that detect the eye movement of students. There are softwares that are installed on students' devices that tell you or that tell the examination authorities that how much time did they take, what frequent on Excuse their me, ma'am. computers did they log on. Yeah. Excuse me, ma'am. Ma'am, your voice is getting distorted. I don't know whether it's my problem or others are also experiencing, but there's a lot of distortion. Yes, Zesh, Yes, there Zesh, is मैम बहुत डिस्टॉर्शन है. डिस्टॉर्शन है. डिस्टॉर्शन Okay. आ रही है. Uh, all right. My location right now is in a basement. I have come to another university, and I've tried my best to put up my own internet device and to make arrangements. But I don't know, maybe there is some internet connectivity issue. And the weather as well. The weather is very bad where I am. Is it any better? I tried to explain it
मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँ एंड आप इसको समझने की कोशिश करें. वैसे द स्क्रीन इज विजिबल टू यू, यू कैन रीड इट, इट्स अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी slide that is in front of you. We are talking about the 5 very important aspects of teaching, जहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी अप्रोच डिसाइड करनी है ऑफ ऑनलाइन लर्निंग. नेक्स्ट इज योर the online learning content that you want to teach the students. Your relationship status, आप उसको सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस कैटेगरी में कर सकते हैं. सिंक्रोनस का मतलब होता है व्हेन एवरीबडी इज ऑनलाइन एंड एवरीवन इज सपोज्ड टू बी ऑनलाइन इन वन प्लेस एट वन टाइम. And asynchronous का मतलब होता है when you can actually take the teaching and learning experiences with a delay. Then you have your possible instructional methods. आपके ये सब कुछ डिपेंड करता है जो आपके पास resources available हैं. क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, स्टूडेंट्स के पास. क्या आप कोलैबोरेटिव मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, अप्लाइड मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, इंटरैक्टिव लेसन्स बना सकते हैं, या सिंपली पैसिव इंस्ट्रक्शन करेंगे. The weakest is passive instruction, of course, and the most powerful is collaborative and applied instructional strategies. So it depends on you कि आप के पास at the given point किस किस्म के रिसोर्सेज हैं और आप कैसे पढ़ाना चाहते हैं. एंड लास्टली आपकी जो असेसमेंट है वो 2 तरह की हो सकती है इन पाकिस्तान, आइदर रिफ्लेक्टिव और ओपन बुक एग्जाम्स. एंड एक तीसरी कैटेगरी है जो कि प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं. बट जो प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन है वो उसके लिए रिसोर्सेज हमारे पास पाकिस्तान में इतने फीजिबल और सूटेबल नहीं हैं. Are we clear on this? Should I move on to the next slide? Yes, ma'am, please. Okay, thank you so Yes, much. ma'am. What is proctored? जी, proctored exam. Okay, proctored examination का मतलब होता है जैसे हम conventional setting में when we conduct an examination, there is an invigilator in the room who makes sure that nobody cheats, nobody opens up the books, there is no reference material available to the students, and we make sure that the examination are conducted in a very fair environment. So online भी ऐसा हो सकता है, मगर उसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं जो कि स्टूडेंट्स की डिवाइसेस पे एक्टिवेट किए जाते हैं. उनके कैमराज ऑन होते हैं. दो सॉफ्टवेयर्स रिलाई ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो अपना एक पूरा रिपोर्ट जनरेट करके इनविजिलेटिंग अथॉरिटीज़ को देते हैं, जिसके अंदर वो बताते हैं कि द स्टूडेंट टुक सो एंड सो टाइम टू कंप्लीट द एग्ज़ाम. He or she referred to online sites. If he did, which online sites were opened up. If any other kind of activity is recorded on students' devices, they also report that. So based on the activity that students carry out during the exam time, a percentage of cheating or plagiarism is being asserted. एंड एक सर्टन लेवल से ज़्यादा जो परसेंटेज है उसको वो एग्जामिनेशन या वो स्टूडेंट प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाता. उसको चीटिंग की या फ्रॉडुलेंट एग्जाम कैटेगराइज करके उसको नल एंड वॉइड कर देते हैं. तो ये जो सिस्टम है ये पाकिस्तान में बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे कॉलेजेस यूज़ कर रहे हैं. However, students from the public sector universities may not have access to such sophisticated software, and if students do not have access to this kind of software, then it is useless for us to talk about it. क्योंकि आप तो शायद इसको अप्लाई कर लें, लेकिन जिनकी डिवाइसेस पे आपने ये सब कुछ इंस्टॉल करना है, अगर उनकी डिवाइस इसको सपोर्ट नहीं करेगी या वो सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर इस बारे में बात करने का हमें कोई we are not going to go into further detail of this. Yes, you should know about it for your own knowledge that there are certain softwares which are used for proctoring examination, but let's not go into further detail. Thank you, ma'am. All right, so now comes the planning phase for online instruction.
इसका तरीकाकार वही रहेगा जो आप अभी कर रहे हैं in your conventional teaching and learning setup. You have a course outline which is approved by the Higher Education Commission, also by your university. You're going to stick to that course outline. You will choose the core student learning objectives only. When you're teaching online, the content is always lesser than the content that you can teach in conventional setting. कन्वेंशनल सेटिंग में अगर आपके पास 10 चैप्टर्स हैं और आपने रोज जाके 45 मिनट्स का लेक्चर देना है तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट कवर कर सकते हैं. बट व्हेन यू आर आस्किंग स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन देयर ओन और व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग द ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज, आपके पास कंटेंट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, कंडेंस हो जाता है. सो जब आप कंडेंस कर रहे हैं अपने कंटेंट को, तो जस्ट चूज द कोर स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. What do you essentially want the students to learn at the end of your course? Highlight those things and go in the depth of all of those learning objectives without leaving anything, any specific detail. But जो number of objectives हैं वो definitely कम हो जाते हैं. Then one advantage that you can have in the online setting is that you can bunch the similar kind of learning objectives together. For instance, in the regular or in conventional setting, when you teach unit wise or maybe topic wise. But in the online setting, you can combine all similar topics together, put their student learning objectives together, and take the students in a suitable manner over all of the सिमिलर टॉपिक्स. इसका फ़ायदा ये होता है कि जो कंटिन्यूटी है आपकी इंस्ट्रक्शन में वो ब्रेक नहीं होती, और आपकी जो लर्निंग इंटरवेंशन है उसमें भी आप टाइम ड्यूरेशन का इतना ख्याल, बेशक उसको आप रिस्ट्रिक्ट मत करें कि आपने 45 मिनट्स का ही लेक्चर प्लान करना है. आप अपना एक गो में एक बड़ा चंक प्लान कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड देन सेट अ टाइमलाइन फॉर द स्टूडेंट्स टू अकम्प्लिश दोज ऑब्जेक्टिव्स. So that's one advantage in teaching online. You can choose from a range of teaching strategies. Please don't think that lecturing is the only possibility. Lecturing एक one of possibilities है. इसके अलावा online education enables students to take charge of their learning on their own, and they can engage in a lot of self-driven activity. Maximum duration of your talk should not be over 8 minutes. Every 8 minutes you must break your lecture with an activity. Please don't think that this training session is a good example of online teaching, because this, again, I would say that the content is too much and time is short. That's why I'm talking for more than 8 minutes. Of course, it's quite long that I'm talking and not taking your responses or not engaging you in any activity. That reason being, I want to impart this knowledge to you. But when you're teaching your students, you must keep in mind that every 8 minutes, you must break your lecture to engage students in some hands-on activity or reflective task, or maybe group work or pair work or thinking activity, or maybe you can take them to another application where you ask them to do something, record their experiences, something that involves them, something that breaks the monotony of your conversation only. You're essentially in online teaching, you must follow the backward planning model. The backward planning model means that first of all, you think about the learning objectives. Secondly, you think about the assessment objectives, and the rest of your planning is done around these two very important elements. The learning objectives are the first stage. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही आप अलाइन करेंगे अपने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, और जो असेसमेंट आपने लेनी है, अब आप कैसे बच्चों को मास्टर करेंगे ऑन दैट कंटेंट. All your instructional activities will and should focus on that. That is it.
सो यूजुअली जब हम कन्वेंशनल सेटिंग में पढ़ाते हैं तो हमारे पास एक कोर्स आउटलाइन होती है, हमें अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का पता होता है. वी प्लान एंड वी फोकस ऑन द इंस्ट्रक्शन. वी डोंट फोकस सो मच ऑन द असेसमेंट objectives, because that we can go into the classroom and conduct a quiz, or we can give them a test, or we can ask them to write something and assess them on it. But in online setting, assessment is not so straightforward. When the assessment is not so straightforward, then the first thing that teachers should do is to think about how are they going to assess students. After you make a plan and after you decide that what sort of assessment would you have, after that you're going to think about the instructional intervention, that what is the best possible way for you to enable your students to master these assessment objectives. This is what backward planning model refers to, and you should all read about it. I've already explained that the two main elements of online teaching are student learning objectives and assessment plan. Are we clear on this? Should I move on? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So the principles of instructional planning. Now let's talk about what are the principles when we have talked about the overall method of planning. But कौन सी चीजें हैं जो कि हमने जिनके लिए mindful रहना है when we are planning for the online teaching. First is that you have to identify your learning objectives. Better is that your teaching should be outcome based teaching. Outcome based teaching का मतलब है कि आपने जो कल्मिनेशन है अपने लेक्चर की उसको इन्विजन करना है. आपके स्टूडेंट्स क्या करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने सक्सेसफुली पढ़ा दिया. सो वो क्या करेंगे? द फोकस इज ऑन द आउटकम. And when you decide the outcome, you plan your lecture in a backward manner. Always align your assessment objectives with your lesson students' learning objectives. And when you're defining the assessment, it is very important that you are mindful of the RIP of the assessment. Now, what is the RIP of assessment? This acronym that is written here on the screen, VRIP, it means validity, reliability, impact, and practicality of your assessment. Your assessment is valid when you assess students only on the things that you have taught them. Your assessment is invalid when you ask students about something which you have not taught them. Your assessment is reliable when you have a proper detail of the criteria, your expectation or rubrics are shared with the students. हमारे यहाँ सबसे बड़ा disconnection between the assessment and students' performance is that teachers do not tell what are they expecting from the students. We give them a question and we have the expectations in our own minds, but we really don't give enough consideration to the fact that if they know about the criteria or the success definition. So your students should know कि आपके जहन में सक्सेस का क्या मतलब है. You and your students must be on the same platform when it comes to expectations, and this makes your assessment reliable. The impact of the assessment means that the assessment should not scare away the students. ऐसी assessment नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर आपके students सीखने के बजाय डर जाएं, खौफजदा हो जाएं और उनको ये एहसास हो कि हम बहुत नालायक हैं और हमें कुछ नहीं आता. स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ तो आता होगा और आप एट द एंड ऑफ द डे आपने उनको पढ़ाया, आपने क्या पढ़ाया, आपने कुछ तो अच्छा पढ़ाया होगा जो उनको समझ आया. So try to give a positive impact of the assessment. Try to use the assessment as a mean for learning, not as a mean for scaring away students. In our previous lecture, we talked about four essential feelings that students should have. Does anyone remember what are those four feelings that students should have in order to make them work harder in, I mean,
बी इट कन्वेंशनल सेटिंग और ऑनलाइन सेटिंग, हमने 4 ऐसी चीज़ों की बात की थी कि अगर आप ये फीलिंग स्टूडेंट्स को देंगे तो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग और मोटिवेशन उनकी इज लाइकली टू इंक्रीज. Can anyone repeat those? They were very straightforward elements: uh, attention, relevance, confidence, and satisfaction. ARCS, and these are based on Keller's ARCS model of motivation. So, when anyone, be it myself or you, when we are given attention, when we have this feeling of confidence, when we think that what we are doing is relevant to our own goals, and when we have this innate feeling of satisfaction because we are able to do something, we are able to learn something, we are likely to get back to that task again and explore it further. This is human nature. But if you steal away these 4 feelings from the students, ना आप का कंटेंट ऐसा हो जो कि उनके रेलेवेंट हो टू देयर नीड्स, ना उनको कॉन्फिडेंस की फीलिंग आए कि बल्कि इनफैक्ट उनको असेसमेंट जो आप उनके लिए प्लान करें उसको असेसमेंट को करते हुए उनको बार बार ये फीलिंग आए कि we're not able to do this, then they will feel underconfident, and when they will feel underconfident there is going to be a deep sense of dissatisfaction, and this dissatisfaction will lead them to withdrawal from the course, or maybe withdrawal from their studies. Dropouts हो जाते हैं बच्चे, motivated नहीं रहते during the course of studies. So basically this is catered by a positive impact of the assessment. And when we say that the assessment should have a positive impact, we don't mean to say कि आपकी assessment बहुत आसान होनी चाहिए. I mean to say that the assessment should be used as a tool for learning, not for scaring away students. और जब आप स्टूडेंट्स को अपनी सक्सेस क्राइटेरिया या अपनी एक्सपेक्टेशंस प्रॉपरली उनको गाइड करेंगे, दे आर लाइकली टू पिक ऑन दैट एंड दे आर लाइकली टू परफॉर्म इन अ बेटर वे. एंड लास्टली, the alphabet P stands for practicality. Do not use resources which are not accessible with the students. Do not use assessment styles which everyone cannot cater to. For instance, आपने एक timed quiz बनाया है. यूजुअली आप कोशिश करें कि आप क्विजेस को ओपन बुक एग्जाम्स के तरीके से लें, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स का जो कॉन्टेक्स्ट है, हो सकता है किसी के पास एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी ना हो, ये भी हो सकता है कि किसी के घर में पावर स्टॉप गैप हो. So because we are in Pakistan and this is our life and this is reality, we have to keep in mind all of this. Do not ask students to use a software which has to be paid for. So all of these things have to be considered by the instructor. Assessment की validity, reliability, impact and practicality को mindfully plan करें. We have talked enough about the success criteria, but let me briefly tell you that what is success criteria. It's a set of expectations of performance. When you say that this was a good work, what do you mean by the word good? It's very subjective. It may mean different for you, and for me it may be something else. Similarly, when you say ask the students, explain the concept, what do you expect them to do? How much of explanation do you want them to give? Do you want them to supplement their answer or explanation with some figure, or do you want some research-led task? Exactly define करें. Success criteria for learning. Somebody's mic is unmuted. If you could please mute your mic. Please run a check on your mics. Thank you so much. आपकी जो instructions हैं of any task that you're asking students to perform, they have to be thought out well. No spontaneous instructions work well in the context of online teaching and learning. They have to be well thought out,
well written, time properly unko दें, don't set unreasonable timelines for them. Again, I would say this is Pakistan. There are internet issues, there are electric supply issues, there are issues related to a steady access to a dedicated device. All of these things are real life challenges here in Pakistan. Please set realistic timelines. But whatever timelines you set, then don't change those. ये भी एक बहुत important बात है in online teaching and learning. If you give realistic timelines, then there is no reason for you, and there shouldn't be any reason good enough for you to go back and change your deadlines for the students. Don't do that, because then students are going to manipulate you and they will come up with reasons which you will not be able to put down. रेलेवेंट रिसोर्सेज को डिसाइड करें कि आपका जो क्राइटेरिया है उसके अंदर किस किस्म के रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू राइट डाउन द क्राइटेरिया. देयर आर अ नंबर ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल विच यू कैन रेफर टू. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ वेबसाइट by the name Ruby Star. You can find the rubrics for so many concepts over there. You don't have to reinvent the wheel. You can simply adapt the set of criteria, and by setting this criteria, actually you are going to uplift the quality of your instruction. Because जब हम पढ़ा रहे होते हैं उस वक्त हमारे जहन में अपनी expectations इतनी clearly defined नहीं होती, but जब हम assessment plan करके उसकी criteria लिखते हैं, success criteria, so we are more mindful of inculcating that criteria in our instruction, and you will see that there is a visible change in the quality of instruction as well when you start to define the success criteria for students. Then you have feedback and evaluation. This is also very important. Feedback and evaluation. Your teaching is incomplete in online setting. You must give individual improvement paths to the students. अब individual pathways provide करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए और आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा काम है. But when you have the success criteria ready, so all you have to do is to tell students what did they do good in the light of that criteria, and where do they need to improve themselves. You don't have to rewrite everything. You can simply refer to point 1, point 2, point 3 are being covered well, and point 4, 5, 6 need further improvement. And because those points are defined in your success criteria, students can go back to the success criteria, read it, and understand what are their individual learning paths. This is the quickest way of providing feedback in online setting. Are we clear on the content listed on this slide? Should I move on? Can I go ahead? Please. Yes, please. Thank you so much. Thank you. Now, the next Yes, important. there was the voice distortion and I could not listen properly. We are IP. Excuse me, madam. Tell me Yes. for what these words stand for. We are IP. Its validity, Yes, reliability, and IP. It's validity, reliability, impact, and practicality. Ma'am, please share the link of the website, name of the website that you just mentioned, where we can find the rubrics for all that we need to plan in, because we couldn't hear because of the distortion. I am so sorry about this poor quality of voice, but there No is problem, ma'am. absolutely It happens nothing all that the I time. can. It's not your fault at all. So I have it there in the meeting chat. RIP means validity, reliability, impact, practicality. The web page that I referred to was rubystar.com. Thank you, madam. No problem. Now, the next important thing for us to consider is the nature of activities. What sort of activities are you going to perform? We did talk about it, that there should be self-directed. It can be self-directed, jiske andar reading, watching, listening, and this is student oriented.
आपने resources बना के students को दे दिए and now they have to do it on their own. And the other is interactive, where either the students are interacting with their peers, or they are interacting with the teacher, or they are interacting with the technology. These are the three things that students interact with during online lectures. And these are the three categories of interaction. But whatever way of teaching is, whatever is the nature of activities, always remember that 60% of your online teaching time should be dedicated to student driven activities. If it is a 45-minute long lecture, 27 minutes should be given to student driven activities. अब student driven activities क्या होती हैं? ये हो सकती हैं, आप students को कह सकते हैं आपने कोई concept कराया, आप उसके बाद उनको 1 minute reflection summary लिखने को कह सकते हैं. You can talk to them and make groups and जी. Nashaba, I think your mic is unmuted. Thank you so much, Nashaba. So I hope that you can you do understand when we say that student driven activities honi chahiye, then these activities are basically the activities in which students take part. They are active. They are talking to their peers, they are doing something, they are writing something, they are reflecting on some idea. And there are so many ways in which you can involve the students. Now let's talk about assessment. मेरा बहुत सारा फोकस होता है assessment पे, क्योंकि assessment is a weak link in online teaching. It's the weakest. The whole world is talking about weakness in assessment system. यहाँ तक कि Cambridge International Examination on the first year of COVID-19 had to postpone their exams. They did not conduct online examination just because of the kind of challenges that online examination may pose. और जो हमारे यहाँ एक disparity है in access to resources, yeah, the quality of internet, the poor quality of internet that we have in Pakistan or countries similar to Pakistan, it is not recommended that assessment is taken in online setting. So assessment एक बहुत critical aspect है in online teaching. However, assessment का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एक process से आपने data collect करना है, और ये data आपने over a period of time collect करना है. ये बिल्कुल गलत method of assessment है कि आप सारा साल पढ़ाएं और आखिर में आप एक high stake assessment रख लें जिसके ऊपर students की promotion based है. यानी कि सारा साल आपने स्टूडेंट्स को कोई फीडबैक नहीं दिया, उनकी परफॉर्मेंस का ना उनको पता चला, ना पेरेंट्स को पता चला, ना आपको पता चला, और आखिर में उनको आपने 40% मार्क्स देके मार्जिन पे पास करके नेक्स्ट क्लास में भेज दिया. या अगर हम यूनिवर्सिटी सेटिंग की बात करते हैं तो द होल सेमेस्टर यू टॉट देम, यू हैव जीरो आइडिया इफ दे आर अंडरस्टैंडिंग योर कोर्स कंटेंट और नॉट, एंड एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर you take a final term exam in which the student scores, let's say, a C or a D, and then that is what is visible on their degrees or on their mark sheets. That's a wrong way to do things. A good way and a good approach to take assessment is to make it a process over a period of time. You must collect data of different nature. कुछ data आपने quantitative collect करना है, कुछ qualitative collect करना है, which means कि कुछ आपके पास tests जो हैं वो closed ended tests होंगे, closed ended items होंगे, कुछ ओपन एंडेड टेस्ट्स होंगे जिसमें आप स्टूडेंट्स की रिफ्लेक्शन को की पोटेंशियल देख रहे हैं, उनकी रीजनिंग की क्वालिटी देख रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को भी जज कर रहे हैं, इवैल्यूएशन क्रिएशन को जज कर रहे हैं. सो ऑन द हायर एंड ऑफ द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. एंड देन some of the assessment should be on the lower end of the Bloom's taxonomy. And that is when you develop a deep understanding of what do students know and how much have they learned the content that that you have taught to them. So overall assessment
की क्या assessment का मतलब है कि आपने overall score बताना है students का. It should be a true depiction of what do they know or their knowledge base. It should not be taken at any one of time and that is it. So अपने आप से पूछें कि आपने assessment क्यों लेनी है. Is it formative or summative? Decide. कैसे लेनी है, कितना टाइम देंगे आप स्टूडेंट्स को असेसमेंट के लिए, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने उनके जज करने हैं टू टेल दैट दे हैव मास्टर्ड द कोर्स कंटेंट. आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं स्टूडेंट से, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन ए ग्रेड स्टूडेंट. Set out those expectations and then share those expectations or rubrics with the students. And lastly, क्या आपकी assessment low stake होगी या high stake होगी? For me as a teacher, I suggest that you should only focus on low stake assessments. High stake assessments are not a good choice that way. Now, the characteristics of online assessments should be they should focus on higher order thinking skills. They should promote critical thinking. When they promote critical thinking, only then you can say that the assessment is being used as a mean for learning. They should be ongoing. You should rely on formative assessments. I know that most of us do teach for the test. हमने पहले भी ये बात की थी कि पाकिस्तान में जो फाइनल एग्जाम कल्चर है दैट इज समथिंग दैट हिंडर्स innovation in teaching and learning. But I personally believe that final test should be taken as a task. Your job as an instructor is to teach and then to assess. So that should be an ongoing process and that should be a formative assessment process. So choose the formative assessment for your teaching and learning activities. Contextualize the assessment according to learners' needs, the relevance of the content, their level of understanding. Don't create assessments to fail students, because if they fail, you failed. Please do remember this, that your success is tied with the success of the students, which does not mean that you artificially pass them, and it does not mean that your assessment should be so easy that students that it offers zero challenge level to the students. You see, when you're focusing on reflective higher order thinking skills and you're setting a suitable level of challenge for the students, that's a good combination. You know, that's a good solution to this entire problem. Lastly, try to create collaborative assessments, try to come up with team performance evaluation. I always do that in the courses that I teach. There is a lot of collaborative assessments. Students learn from one another. They also help each other, but they perform differently. And something that COVID taught us was that we cannot make students stop helping one another. So when we can't make them stop helping one another, then at least we can give them an assessment that encourages collaboration and judges and evaluates each one's performance. So kuch percentage of the assessment should be for the collaborative task, and then some percent can be assessed through a verbal viva, oral viva, which I mean, छोटा सा दो सवाल students से पूछेंगे, आपको पता चल जाएगा how much do they know. So keep at least 20% marks for individual performance, and then 80% marks can go to collaborative performance, which should include the way they present the final product, the way they have collaborated, the punctuality that they have exhibited in their performance. All of this, there can be a set criteria to judge students, and like that you can actually train them to be better team players. Now, I have an activity for you. I want you to think about the possible challenges that one may face when we teach in the online setting. Take about 1 minute to think about a challenge that you have encountered during the last 2 years of teaching
online, what have been your challenges? Just think about the challenges. And I'm sharing a link in the meeting chat, and then you can register your thoughts on that link. Thank you so much. Despite the poor quality of internet, despite the distortion in my voice, I am so thankful to all of you for participating in this activity, for voicing your thoughts, and for putting it out on the virtual board for your colleagues to take a look at. I hope that you all can see the screen and see the wide range of challenges. And if you take a closer look, so many of these challenges are rooted in the technological um, disparities. Lack of facilities, unfavorable home environment, which includes lack of access to computer devices, lesser internet or poor internet connectivity. Somebody also posted in the meeting chat the power stop gaps. Then the second large category of challenges are rooted in the students' attitudes, where it is hard to motivate the students. It is hard to tell them that this is serious education and they must be serious about their performance. So all of these then continuous power cuts is another comment posted. I just saw now in the meeting chat, and then there is let me go through non-availability of gadgets, poor networking, some students don't have devices. So basically there are challenges which can be divided into different categories. If we want to study the patterns in the challenges, we can sort of distinguish them between certain overarching categories. And now let me take you through the categories that I have collated for you. I'll stop to share my screen and take you back to the presentation. Now, some possible challenges that I have listed for you. One is instructor related challenges. आप अपने बारे में भी सोचें. You all have thought about the students, you have thought about the resources, but I know as good teachers, as people with responsibility, we really don't think about ourselves. But it is going to take a toll on you as well, because the planning time will increase, your feedback is going to increase a lot. The kind of empowerment that you enjoy currently is going to go weaker. We all have missed being on campus, teaching on campus, because of so many issues related to empowerment, and the fact that so many people complained. They felt that they were teaching non-stop. They were working non-stop during the COVID times. Their working hours increased. Reason being that students were, establishing this contact with us. We felt it a need to respond back to them, and in doing so, we all were working extra hours. So this online teaching requires some strict balance in your work-life routine. You must dedicate yourself to the working hours the way you have planned. If you want to start your day at 9 o'clock in the morning and you want to end at 2, do that. But then during 9 to 2, please be committed and plan every minute of your time while you're working. Dedicate some hours to teaching, some hours to planning, some hours to interacting with students, but don't do everything all the time, because then you would be really choked with a lot of work of different nature. So try to set a time for answering the queries. Try to set a time for giving a response to students WhatsApp messages or email messages. But don't do it all the time. It will burn you out.
Then you have some assessment related challenges where the reliability in assessment is a huge challenge. The time lapse is a huge challenge. Sometimes we want to take online quiz, but half the class does not have access to the internet at that time, or they don't have access to the devices at that time. So what next? The quiz questions are are out. Even if one student has access to those questions, he's going to tell the rest. So these kind of challenges have been there. Then you have uninformed collaboration. आप जितना मर्जी स्टूडेंट्स को कह लें कि आपने एक दूसरे से बात नहीं करनी या आपने हेल्प नहीं करनी, they would always do that. Then you have weak infrastructure, you have device related issues, you have bandwidth related issues. Then ones who have everything may have issues related to digital competence, their proficiency level to handle or to teach or to learn in the digital environment on their own. Then you have motivation related issues where students don't have so much interest in the online education. There is weak communication, weak follow up. You have some curriculum related issues when there are limited resources, limited possibilities to digitize the resources. You may have institution related challenges where the policy framework of your institution may pose some challenges to you to take the instruction out to open access networks. You may not have the required infrastructure at your institution, such as a learning management system or suitable resources which are extended by the institution itself. And then lastly, you have challenges related to monitoring and evaluation, जिसमें कि ghost writing and plagiarism are the topmost challenges. आपने एक सवाल दिया स्टूडेंट्स को करने के लिए, वो उन्होंने खुद नहीं किया, बड़े भाई ने कर दिया, या in some cases तो even parents have been doing that. So this is reality. Ghost writing is a challenge not just in Pakistan but everywhere around the world, and you have to come up with a solution to manage this problem. These are ये वो वाले problems हैं जो कि fully address नहीं हो सकते. Digital infrastructure के challenges आपकी capacity से बाहर हैं. आप कुछ नहीं कर सकते अगर किसी के पास डिवाइस नहीं है, वो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसको हेल्प करने के लिए इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द डिवाइस. अगर किसी के पास इंटरनेट नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट येस यू कैन प्रोवाइड देम विद रिमोट लर्निंग पैक्स, मगर उनकी एक्सेसिबिलिटी को एड्रेस करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते. इसी तरह अगर इंस्टीट्यूशनल रिलेटेड चैलेंजेस हैं, आपके इंस्टीट्यूशन के पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते उनसे वो लेने के लिए. आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, but then you have to plan your teaching in a way that you manage this challenge. These challenges have to be managed around. They cannot be addressed. So सबसे पहले तो you must identify what are the challenges that can be addressed and what are the challenges that require you to manage your operations around those. I will take you through certain tips that you should know for preparing for success. How can you manage these challenges? You should always work in teams. I always focus on this. Please don't abandon one another. Work in teams, share each other's workload so that you have less time to dedicate for planning and more time to increase the quality of instruction and to give feedback to the students. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, some participants' microphones are open, so your voice is again getting lost. If everyone could please switch off the cameras and microphones. When you see, when you switch on your cameras or when you switch on the mics, the internet capacity is shared for that, and then it weakens the call. Already I'm in a situation where I'm in a place where there's extreme fog, and the weather is very bad. I am based in the basement. My internet connection is not very strong, unfortunately. And when you switch on your mics or your microphones, it shares the bandwidth. It uses the bandwidth, thus reducing the quality even more. So thank you so much for your understanding.
Prepare remote learning packs. As I said, that some challenges have to be just managed. So this is your management. You must prepare the remote learning packs, then you must use the formative assessment and embed it within the teaching so that you continuously have an understanding what are the ability levels of your students and where next do you want to take them. ऑलवेज इनकरेज पीयर टू पीयर कोलैबोरेशन. बच्चे एक दूसरे पे बहुत अच्छी नज़र रखते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे का फीडबैक देते हैं कि उसने कितना काम किया और मैंने कितना काम किया. दे वुड नेवर वांट टू शेयर देयर ग्रेड फॉर फ्री विद एनीवन. Don't make friends be in the same group, but randomly just group up the students and set criteria for peer collaboration. Trust me, students are going to take a lot of your workload off you by evaluating one another, but don't promote the culture of shikayat in your classroom. You should have a peer assessment criteria where you exactly tell the students that what is good collaboration, how should they behave, what are the roles and responsibilities, what do we mean by taking leadership in their roles. All of this training has to be given to the students before you take out the peer collaboration assessment. You can also divide the class into two groups, ask one group to create questions for the other group, and this way students master the concept because they read through the concept before putting out questions for their partners. So you see, there are so many success stories out there for peer collaboration, but try to encourage peer collaboration through your training. And lastly, build on failures. Failure is the first step to success, and those who have not failed even once are not doing a good job. So those who have failed are at least trying and trying to give to increase the challenge level in for their own selves, and that is what is going to make you stronger in your practices. Thank you so much for your patience, for your cooperation through this very rocky call and very rocky training session with a lot of technical glitches. Thank you so much to Punjab Higher Education Commission for engaging me in this training session, and now the floor is open for any discussion, any questions. Because of the poor quality of internet, I'd strongly suggest if you can post your questions in the meeting chat and I can take them. I will take them up. मैम ये ना 4 फीलिंग्स का आपने कहा था, अटेंशन है, रेलेवेंस, सेटिस्फेक्शन, और फोर्थ कौन सी? Attention, relevance, confidence and satisfaction. This is Keller's ARCS model. आप सब पढ़ें इसके बारे में. This is a very old model, but this is still applicable. This is ARCS model of motivation. And then there is two other guys who have worked a lot on students' motivation. They are DC and Ryan's self-determination theory. ये सब theories नहीं हैं. They can be very easily incorporated in your teaching styles. इनमें से आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन theories में से सीख सकते हैं. ये models बहुत practical model है. Keller का model भी और DC and Ryan की SDT. Very relevant to online teaching. Please do read this and try to learn on your own. Anyone else who wants to ask something, I'd be happy to take up your questions. Great. So I'd stop to share my screen now, and thank you so much once again for being all ears and for listening to me throughout this training session. And I hope to see you once more. Hope to talk to you about any other relevant topic. So I wish you all the best and have a very good day. Bilal, are you there in the call with us?
Shazia, you're being generous. This was not Yes, that ma'am. great a lecture. Thank you so much. No, Anyway. ma'am. It was a great lecture in the sense that despite so many problems that we as teachers have also been facing in our online teaching, I mean, these were the same problems that we almost every time face. A connectivity issue, the voice distortion, everything. We had limited time today, as we have as teachers also. We had a lot to cover, as you had to cover today. So, I mean, this was practically an example of what we as teachers have been facing throughout this online teaching. So, despite all these problems, your lecture was great. I stand by Thank you it. so much. Thank you. I'm humbled and I'm very thankful to you for being so resilient group of students who have not given up. And I was very happy to see the amount of responses on Answer Guardian today. I wasn't really expecting with all of these technical glitches. But thanks a lot, Bilal. Over to you, and I'm going to take an exit now. Okay, ma'am. Thank Have you, a ma'am. good day. Thanks a lot for conducting the session, and hopefully we will engage you soon, inshallah, in some other session as well. Thanks a lot, ma'am. चलें. So hoping you are having a good time with your this training sessions, and I think these training sessions, they are really the opportunities to refresh. Okay, we are all teachers and we know how to teach, but these training sessions, they are really blessing in a sense. Okay, it help us to disconnect from our usual routine for a while and then learn not only from the resource person but from each other as well. So when we discuss, when you have some question, please you can ask, but during the discussion and all that. So these are something I always found these opportunities whenever I got to attend some kind of workshops or these types of the trainings. So they really help you to learn something and also refresh yourself, regain something. And also one of the thing which is that when we interact with the resource person and each other, तो मुझे ये लगता है कि अपने आप में एक नई कोई लाइफ फील होती है and we are ready to teach in a more good spirit to our students. So my screen is with you. So keeping in view that we are living in a 21st century, or the demand of 21st century is that we need to change our role. The role of the teacher has been changed from the teacher to the facilitator, and also we need to keep ourselves update with the new technology which is up there. And that technology really is promising in a sense if we utilize it in that way in order to help facilitate ourselves as a teacher and also facilitate the student for their learning. So that is what I know that most of the you and all of the you, they are familiar with most of the things, but just to discuss in a way that how it is going to help us in our daily teaching and learning situation, and in turn really facilitate our student, which is basically the purpose of all these arrangements of the teaching, learning and education and all that. So beneficiary, we definitely keep always in mind that beneficiary are the students. So my question to you first of all is, what is a digital media? What do you think digital media kya hai? If you think of this, if you look at this term, if you think of the kya hai digital media? It's online networking. जी यूट्यूब, ये तमाम जो चीजें हैं जिनके जरिए हम ये जैसे कोविड के दौरान भी जो हमने एक्सरसाइज की, तो ये तमाम चीजें हैं जो ये डिजिटल मीडिया में हैं, नेट के थ्रू, व्हाट्सएप, यूट्यूब के थ्रू जो हमने लेक्चर्स दिए या रिकॉर्डेड लेक्चर्स. media using electronic devices. हाँ जी, electronic devices electronic devices हैं. जी बिल्कुल. Any communication. जी. Any communication through these digital devices, of course, हम इसको digital media कहते हैं. So if we look into from the literature what is the media, or मतलब first of all we need to understand कि media किसको हम कहते हैं. So this term actually comes from the Latin word medius, the medium, which means the middle layer.
And the media is an expression that brings some type of information from one body to another. So definitely we know this. I don't have to explain it more to you. You all know that media kya hota hai. Hum kehte hain na ek layer hai. It's basically a source, a channel through which we pass information from one end to another end. Then before the advent of digital age, the most popular forms of media were what we now call analog or the traditional media. Or so these medium or the media जिसको हम बोलते थे, what were they? The books, newspaper, magazines, billboards, journals, or all types of the printed forms. Which are static, or we have to like consult them. These are in our educational setup. These lie in our libraries, and then we go and sit there and consult them and get the information. So this is now we call this as analog. And with the passage of time, what happened? The telegraph comes into 19th century. Radio and television in 20th century were added. So alongside this printed media, so in 19th century we got telegraph. I think you are familiar with the telegraph. Telegraph से क्या हो गया था कि इससे पहले क्या था कि how we communicate with each other through the letters. Letters उसको post हम करते थे, and then the other person receive after a week or so, कुछ time के बाद. But telegraph was the first time it happens कि थोड़ी सी quick communication होगी, but that communication was few lines that could be conveyed immediately to the other end. Then in the 20th century was the television time, जिसके अंदर television आ गया, तो इससे हमारा जो ज़्यादा quicker information जो थी वो everybody हर घर के अंदर जैसे information जो है वो आना शुरू होगी. So the radio and the television, they are the first form of the mass media basically. So because the masses of the people, number of the people, they got the message simultaneously from the radio and the television. So then comes in after in the 20th century, so the technological revolution has brought in, and it brought along with it many types of the media that now play a major role in disseminating information and entertainment to populations around the world. So there are many things now we know that has been added, this technological revolution. Also, these digital media includes use of computer, tablet, cell phone, web-based system, apps, and so on and so forth. And we know that the things are keep on adding. होती चली जा रही हैं. मतलब अब पहले कंप्यूटर था, then comes the tablet और cell phone थे, और अब इसके बाद every other day पहले सॉफ्टवेयर्स होते थे, अब सॉफ्टवेयर से ज्यादा apps जो हैं, we found them more user friendly, more quicker. So things are being added. Or digital media, these are all the forms of the digital media. So the digital media might come in the form of the videos, articles, advertisements, music, podcast, audiobooks, virtual reality, the digital art, and etc. All these things. So when the use of internet has become very common in most of the world, the digital age was fully underway. So these devices, they were functional when? They were more functional when the internet comes in. So this www, with having the internet with us, the connectivity was maximum, and we were getting the information more quicker and the faster. So after the 20th, then now we are in the 21st century with all these advanced form of the digital technology and the media, for which we can get lots and lots of benefits. These are not just for the sake of entertainment purpose only, but these have the potential to get many things out of it, which can facilitate us as a teacher and our learner as well. So this is the graphical presentation, how this learning paradigm has been changed till the 21st century. So previously, when we look into the past, if you're familiar with something related to the learning theories or kind of stuff, so previously it was all rote memorization. If we trace the history of the teaching, so we came to know that initially what was the practices, it was just the memorization. The teacher used to tell the facts and the reality to the students, and the students, they were
required to memorize them. So memorization was the only way, और उसके अंदर वो memorization जो है, जो drill और practice की होती है, उसे हम कहते हैं behaviorism. लेकिन with the passage of time, it appears to the teachers and the educators that it is not only the behaviorism, the memorization. So there are many things which are going on into the mind, thinking. And the learners, they are not the passive learners. They think as well. These are not the learners which are just depending upon the teachers to tell, but they really can think at their own as well. So then comes the cognitivism. Cognitive ke baad constructivism. So constructivism is the teaching learning strategies or the theories which says the learner learn based on their existing knowledge. They construct. They have existing knowledge, information, and then they construct the new knowledge into them. And this constructivism leads to the 21st century digital age. So this digital age actually is helping this constructivism a lot. So this is how this continuum or the arrow is working from the past till the present. Then digital media in teaching and learning में क्या था? What are the factors which affect the use of technology in teaching and learning? अब आप ये देखिए कि apart from the fact, when we are saying in the previous slide that we have now with us the computer, tablet, cell phone, web-based system, apps, and everything, but still, if we look into the practices, then what we found is that the use of all this technology and the media is not as much as it should be. और the use बहुत minimum है, हम थोड़ा बहुत कहीं पर इसको use कर रहे हैं, but not to that extent which is going to benefit our learner और उसकी understanding और concept clarity में उनको help करते हैं. When अब जब research की गई तो उसके अंदर what were the reasons? The reasons were, these were the factors which I have listed for you. कि what were the reason why those technologies, although they are among us, हम उसके अंदर ये नहीं कह सकते कि we are the poor country और हमारे पास ये नहीं है. We have everything. We have computer, we have tabs, we have all different types of the apps और इसके बाद cell phone है, internet है, and everything है. But still its use into the teaching learning practices is not as much as it should be. So अब reason उसकी क्या आई? First of all, the reason ये आई कि beliefs. So there is a lot of research which says it all depends on teacher beliefs. Beliefs mean that if the teacher has this belief that yes, this is a useful thing or I should use it, so then definitely teacher usko use karega. लेकिन अगर वो इसको believe ही नहीं करता, because I as a researcher भी or as a teacher भी, what I feel is कि whenever I present something into the conference में अपने कोई technology से related कोई conference present करती हूँ, still in this age as well, I tell you without exaggeration, people tend to say कि मैडम आप कौन सी बात करती हैं, देखिए वो जो ब्लैक बोर्ड और चौक का जमाना था उसके अंदर तो वो तो बड़ा लर्निंग थी और अब नहीं है. So that means कि it depends on our belief. If we still believe in blackboard and chalk, तो फिर इसके बाद there is no power on the earth जो आपको कह सके कि आप इनको use करें. So the one point is the belief. Number two is intention. So if we believe, yes, the technology is useful, but if we don't want to use, हमारी intention नहीं है उसको use करने, हम कह रहे हैं ठीक है फायदा तो है इसका लेकिन कौन इतनी botheration करे, इसको इस्तेमाल करें, बस रहने देते हैं. So intentions जो है वो फिर भी ये use नहीं हो सकता. But if the intentions are positive towards the use, so which means कि we can make every possible effort to use this latest technology for the sake of better teaching and learning. And then resources, of course. So of course we are keeping in view that we are not very rich country, poor country, या जो कुछ भी है. So there are some resources, the lack of resources as well. कुछ part में resources नहीं भी हैं और वो भी एक excuse कहना जाता है कि because the schools they don't have the computers and the labs or so, तो कैसे वो उसको use करेंगे, या colleges के अंदर ये facility नहीं है, universities में नहीं है, तो उसको कैसे use करेंगे. And then institutional context above all. So if an environment within an institution, either it is a school or college or the university, if the environment is that yes, there is being the technology is being used by everyone,
तो वो जो एनवायरनमेंट होगा ना वो भी आपको यूज करने के ऊपर फोर्स करेगा कि यस इफ एवरीबॉडी यूजिंग आई शुड आल्सो बी यूजिंग, जिसे हम कहते हैं ना माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये वो पॉइंट है। सो दीज आर द पॉइंट के हम कहते हैं कि क्यों टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही और कैसे होनी चाहिए। सो अगेन देयर आर सम पीपल, उन्होंने कहा कि जी पॉलिसी में भी नहीं है, तो पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट for the use of technology is also has a strong influence कि if there is something into the education policy for the use of technology तो ये use हो जाएगा। But luckily we have the 2000 education policy हमारी जो 2009 की थी, एक पूरा उसका एक separate document है on use of technology। ICT strategy के नाम से अगर आप इसको सर्च करेंगे 2009 में, तो it's an entire document which give you a lot of guidelines about कि भाई हम जो है ना किस तरह टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। So this is how we said कि there are 3 ways of use of technology into our teaching. एक है learning with technology. Learning with technology means that a teacher and the learner use technology resources to support the classroom curriculum. यानी वो उसको उस तरह से यूज कर रहे हैं which to support the curriculum. फिर है learning through technology. Learning through technology means that teacher and learner use technology to transform the process of teaching and learning in a new ways. यानी वो through technology के through जो है वो अपने classroom environment को transform करना चाहते हैं. Learning about technology is what the teachers and the learners develop skills as, like for example you are here in this workshops and in this training workshops, so learning about technology, how the technology is going to be helpful and the useful. So these are the 3 different ways or the approaches how we can utilize the technology into our teaching and learning. So next we will discuss about the digital media tools, कि कौन-कौन से टूल्स जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं जिनको कि हम यूज करके अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है उनको इफेक्टिव कर सकते हैं। And I have just included those tools जो कि which are available to us, because tools there are many, बहुत सारे sophisticated और modern technology अब तो आ चुकी है, but in this particular presentation I've just included those जिसको कि हम ये ना कह सके कि अच्छा मैडम तो आप वो बात करें हमारे पास ये चीजें नहीं है। So there are different tools which are available to us, access to us. So first of all the PCs. So these are the different that is how the computer has been started, through the PCs, and then the laptop. So the laptop पहले PCs था, that was a big one, और उसको पोर्टेबल नहीं था जो आपके डेस्क के ऊपर ही होता था, but with the passage of time advancement के साथ, so laptops comes in which are portable in nature, you can take them along with you wherever you go. Then comes a notebook. Notebook is a smaller version of the laptop, छोटा सा होता है और इसको you can keep in your handbag और उसके अंदर आप उसको रख सकते हैं, and you can work on it just like a PC और laptop के साथ कर सकते हैं। और ये जो notebook थी, first of all it was being used by the journalist जो थे उन्होंने इसको यूज किया क्योंकि ये लाइट वेट है, हैंडी है और आप इसको कैरी कर सकते हैं। Then we have this internet world जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया to the all communication of the world में। तो इंटरनेट और emails, browsers, websites, search engines, chat, etc. So these are, so first of all, with having the internet, सबसे पहले क्या हुआ कि the communication become quicker through the email. पहले जो हमें किसी को लेटर लिखते थे और उसके बाद उसको एक वीक या 5-6 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में पहुंचता था. So email was much quicker. So the moment we send the email, the next moment the recipient has this with him or her. So that was the quick way of communication. Then we have all these search engines, Google, Yahoo, MSN, and Excite, and all these search engines हैं. Google is not the only search, वैसे हम ज़्यादा उससे ही familiar हैं Google से ही, लेकिन ये है कि बहुत सारे search engine और भी हैं जिससे हम अपनी information जो है वो search कर सकते हैं. Firefox है, Mozilla है, और Chrome है, और all that. So these are really help us to connect or help us to get the information for us. Then this audio video conferencing started. Audio conferencing was just a matter of the past. Ab itni zyada ye is not in practice, but
Audio conference mean, I think if you have experienced the audio conference call through the telephone, कभी किसी ने experience किया हो, तो they know कि you can connect more than 2 people simultaneously and they can talk each other on the cell phone. Call cell phone से या दूसरी उससे आप connect कर सकते हैं. और video conferencing जो थी, after the audio conferencing, that comes the video conferencing. Video conferencing में क्या हुआ कि the people from the different places, they can see each other. They can sit together, discuss, interact, and they can see each other. और ये जो और सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक बहुत बड़े बड़े रूम्स सेट हुए जिनके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पूरे टूल्स और इक्विपमेंट्स थे. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास स्काइप आ गया. सो वी यूज्ड टू हैव दिस वीडियो चैट्स और विद ईच अदर. और अब तो खैर वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, मीट, गूगल, जूम, इन सब के साथ हम जब अपनी वीडियो ऑन कर लेते हैं तो वी कैन chat with each other, we can see each other. So this is how we across the world we can have discussion or kind of stuff. And digital library ने भी बहुत ज़्यादा help किया हमें. So first previously क्या था, they were the wooden catalogs in the library, बहुत बड़ी बड़ी थी और एक पूरा कॉर्नर होता था जिसमें के लाइब्रेरी के वो प्रेजेंट होते थे और कैटलॉग से आप सर्च करते थे. बट दिस डिजिटल लाइब्रेरी हमें बहुत हेल्प किया इन ऑर्डर टू मेक आवर सर्च मोर इजी. और इससे जो है वो हमारा एक कंप्यूटर के अंदर ऑल बुक्स जो है वो लिस्ट जो है वो अवेलेबल है. सो यू जस्ट नीड टू सिट एंड सर्च इधर ऑथर वाइज और बुक टाइटल वाइज और किसी तरह से भी आपको सर्च कर ले तो आपको वो जो ये हेल्पफुल होता है. देन वी हैव दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एज अ टीचर आई यूज्ड टू गिव माय स्टूडेंट द एक्टिविटीज ऑफ दिस काइंड. दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड दिस स्लाइड इन दिस प्रेजेंटेशन. फॉर एग्जांपल द न्यूज़लेटर, द पोस्टर्स एंड द ब्रोशर्स. So I give my students the assignments. Okay, they have to make a newsletter, और उस newsletter में you can have the news of your department, of your class, और किसी भी level के ऊपर आप उसकी जो है वो उनको publish कर सकते हैं. अब publishing a newsletter is not a difficult task because you just need a printout. आप उसको लिख लें और उसके बाद उसका प्रिंट ले लें तो आपका न्यूज़लेटर इज रेडी, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द जो प्रेस और उसमें जाने की बजाय. फिर उसके बाद पोस्टर्स हैं. पोस्टर्स की भी एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है जो अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं टू प्रिपेयर द पोस्टर्स देमसेल्व्स. सो पोस्टर्स आर बेसिकली द display which use the bright colors and then they used to give the message to the masses. बहुत सारी मैसेज में. So आप अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर कहेंगे जी पोस्टर डिजाइन करें और उसकी लिए तो वो कर सकते हैं. इसी तरह से ब्रोशर्स हैं, जैसे भी किसी भी उसके लिए ये 3-fold और 2-fold ब्रोशर्स होते हैं. So these are again research based activities हैं. When you assign your students, so they do the research, find the facts, और इसके बाद वो उसके ऊपर ब्रोशर प्रिपेयर कर सकते हैं on the computer. So these are the different tools which could be utilized for the teaching and learning or which are facilitating us. But there are other forms कि हमने इनको अब किस तरह से actually use करना है in order to facilitate our teaching. So first of all is the e-portfolio. So what is portfolio? Are you familiar with this? Portfolio क्या होता है? आप इससे familiar हैं? किसी को पता है इसका? मैम a sort of a profile. Yes. Collection of your works. Yes, good. Collection of your work. In form of images or anything. Yes, good. Or anyone else? The one who is familiar with this. See, it's a kind of a consolidated information about you, your work, everything that you have been doing and things that you want to present to others. सही है. So देखिए और आपको पता है कि हाँ जी. Sorry. Yes. Even it includes qualifications at times, experiences, beliefs, everything. All the materials. Collection of investment भी हो सकता है. जी. So पोर्टफोलियो का आपको पता है कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है?
कहाँ यूज होते थे पहले पोर्टफोलियोज, और उसके बाद उसको हमने एजुकेशन में यूज करना शुरू कर दिया? कोई गेस कर सकता है कि पोर्टफोलियो, द वर्ड पोर्टफोलियो जो है ये कहाँ से आया है? एंटरटेनमेंट जॉब सर्चिंग में हुआ होगा शायद। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत हुआ शुरू में। बिजनेस वर्ल्ड, ये फाइनेंशियल बिजनेस वर्ल्ड। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है। आई फाउंड दिस कि इसकी इनिशिएशन हुई है फाइन आर्ट से, because when the artists they used to keep the masterpieces of their work in one file. जैसे for example हम ये कहते हैं कि is a photographer, how he or she could show his or her skills. तो वो क्या करेगा कि अपनी जो बेस्ट पिक्चर उसने अभी तक जो ली हुई है उसकी एक एल्बम बना लेगा। सो एल्बम इज अ पोर्टफोलियो ऑफ अ फोटोग्राफर। इसी तरह से जो फाइन आर्ट्स के अंदर कोई जो आर्टिस्ट है या कोई पेंटर है या कोई भी है, तो उसकी जो बेस्ट पेंटिंग्स होती हैं, आपने कभी शायद देखे हैं या नहीं, बहुत बड़ा सा एक बैग होता है जिसके अंदर उन्होंने अपने बेस्ट मास्टरपीसेस जो है वो रखे होते हैं। दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। सो अगेन ये जो कलेक्शन वाली जो बात है ना अभी आपने की है कि कलेक्शन ऑफ वर्क है, तो ये द वर्ड पोर्टफोलियो एक्चुअली कम फ्रॉम द आर्ट्स, फाइन आर्ट्स से आया है, जिसका पर्पस क्या था कि जो स्टूडेंट का जो काम है या जो किसी का भी जो इंडिविजुअल है उसके जो मास्टरपीसेस हैं या उसके जो गुड वर्क है उसको कलेक्ट कर लेना एक जगह पर। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ वर्क डेवलप अक्रॉस द वेरिड कॉन्टेक्स्ट ओवर द टाइम। यानी पिछले 10 सालों में, पिछले कितने सालों में अगर पेंटर ने बहुत अच्छा काम किया है या किसी स्टूडेंट्स को हम उनको रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकते हैं। सो दैट इज द पोर्टफोलियो has been utilized in the beginning। फिर इसके बाद तो जाहिर है पोर्टफोलियो जो थे वो हर किसी के पास ही इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते गए। सो पोर्टफोलियो कैन एडवांस लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स एंड और फैकल्टी विद अ वे टू ऑर्गेनाइज, आर्काइव एंड डिस्प्ले पीसेस ऑफ द वर्क। अब देखिए जैसे अगर हम अपने बच्चों को जब छोटी क्लासेस के अंदर प्राइमरी लेवल पे या दूसरे भी उसमें जब हम अब स्कूल्स में उनको एडमिट कराते हैं तो आप देखिए कि उसकी एक फाइल बन जाती है। सो ऑन द पीटीएम्स जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, द टीचर यूज्ड टू शो अस दिस फाइल ऑफ आवर किड्स कि अच्छा जी आइए पीछे से ट्रेस करके ये आपके बच्चे का काम है, ये सारा उसने क्लास के अंदर जो काम किया हुआ है, ये उसके राइटिंग के सैंपल्स हैं, ये उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये सारा है। सो दैट मीन्स अगेन कलेक्शन ऑफ द वर्क ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। So with the past, now when we are in a digital age, now the concept is the e-portfolio. E-portfolio means that we don't have to keep the hard copied material at one point. So keeping in view the facility of the electronic gadgets with us, so we can have the collection of everything, audio, videos, pictures and everything in electronically in a portfolio। तो उसको हम कह देते हैं ई पोर्टफोलियो, जिसके अंदर हार्ड कॉपी कोई भी नहीं है, बल्कि एवरीथिंग इज ईदर इन ऑडियो फॉर्म, वीडियो फॉर्म, पिक्चर्स हैं या उस तरह की चीजें जो है उसके अंदर दी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो है। सो द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट अलाउज फैकल्टी एंड अदर प्रोफेशनल्स to evaluate student portfolio using technology which may include the CD-ROM, the internet, videos, animation or the audio। अब electronic portfolio is basically एजुकेशन में हम क्यों यूज करते हैं? फॉर द सेक ऑफ असेसमेंट, असेसिंग आवर स्टूडेंट्स, evaluating them। हम उनको evaluate करने के लिए, असेस करने के लिए ये पोर्टफोलियोज जो है वो यूज करते हैं, सो दैट वी कैन सी अच्छा हाउ द स्टूडेंट इज प्रोग्रेसिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसमें उसके जितना भी काम होता है उसको जो है वो कलेक्ट करके और इसमें कहते हैं। तो अब बिकॉज ई पोर्टफोलियो इज डेफिनेटली द सॉफ्ट इन नेचर है, तो फिर उसके अंदर हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? इंटरनेट चाहिए, सीडी रोम के ऊपर आप सेव कर सकते हैं, उसके अंदर there should be the videos, the animation or the audios into it, so you can ask your students और उसके बाद they can develop their own e-portfolios। वो अपने खुद ही पोर्टफोलियो बना सकते हैं। that will be a very good exercise for them। और वो सर्च करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह पे स्टोर कर देंगे। So this is good for the teacher and the learner and the parents as well। So they also came to know कि how their children they are progressing। अब उसमें करना कैसे है? अब आप ये कहेंगे अच्छा मैडम बात तो कर रही है, करना कैसे है? So you can ask your student to create their own portfolios। There are different
features available on the internet. सबसे पहले तो Portfolio Gen is a website which allows you to create your own portfolios, your or students की portfolio. उसकी कुछ space होती है और वो provide करता है कि भाई कितना data जो आप उसके अंदर store कर सकते हैं. And other link is ये जो Portfolio Gen है उसका ये link है www.portfoliogen.com. This is a link. आप इस पे जाएंगे तो आपको वो पोर्टफोलियो वाली ऑप्शंस जो है वो आ जाएंगी और इसके बाद आप यू कैन असाइन योर स्टूडेंट और आप खुद भी उनके पोर्टफोलियोज क्रिएट करके उनको कह के ये कर सकते हैं. एंड अदर साइट यहाँ से पोर्टफोलियो डेवलप किए जा सकते हैं वो है गूगल साइट्स. So Google Sites is again a very user friendly from where you can train your students to develop their portfolios there. So इस तरह से इन जगह पे आप उनके portfolio create करा सकते हैं. So देखिए इसमें हमें what is the benefit? So benefit is कि they are used for the assessment purposes, evaluation purposes, and also keep the student busy constructively and positively into the activities which are helpful for them and for the teacher both. So when they are being adding their videos and the audios or अपने writing samples और सारी चीजें कर रहे होते हैं, so the involving the student into healthy and productive activities. So this is one of the way you can use this e-portfolio for engaging your students into the teaching learning activities. So then another media or another form of digital feature or the characteristic what we have is the educational videos. So this is a very good resource. The educational videos, these are the videos which really help students to understand. It is the audio. देखिए, if you look into the past, अगर हम previously देखते हैं, तो एक word use होता था इसके लिए, उसको कहते थे AV aids, meaning audio visual aids. अब वो audio visual aids क्या होती थी कि जिसको हम कहते थे कि ये है चार्ट्स हैं और ये चीजें हैं और कैसेट रिकॉर्डिंग है और इस तरह की चीजें. अब वी डोंट नीड देम एनीमोर. अब हमारे पास जो ऑडियो वीडियो मटेरियल है वो किस फॉर्म में आता है, कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर सॉफ्ट फॉर्म में और मोर एक्यूरेट है. सो द वीडियो इज समथिंग व्हिच इज एनिमेशन है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को भी शो करती है. तो यू कैन शो योर स्टूडेंट्स दोज वीडियोज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर नॉट which do not come into their experience. उनके experience में नहीं आ सकते, लेकिन आप उनको through the video आप उनको effectively you can show them. So video can effectively communicate complex information to students and if used creatively can become a powerful expressive tool. So it depends on how you are using it for explaining something to your students. So teacher can exploit videos in order to create motivation, motivating, memorable and the inclusive learning experience. देखें, आपने एक verbal lecture दिया ना अपने क्लास को, so you have explained everything verbally, but आपने उसी as simultaneously उस verbal के साथ साथ you have shown that some video जो कि उन चीजों के ऊपर होगी, तो फिर उसमें that will be a good experience for them. तो वीडियोस क्या करती हैं एक्चुअली, अफोर्डेंस यानी वीडियो क्या करती हैं, वीडियो हेल्प करती हैं फॉर द वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स. सो इफ वी कांट गो एनीवेयर किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ऑफ कोर्स वी कांट गो देयर, लेकिन एवरी जो फेमस प्लेसेस हैं उनके वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स दे आर अवेलेबल ऑनलाइन. तो वर्चुअली दे शो यू व्हाट इज देयर और उसके बाद वो 3D मोड के अंदर वो जो वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स बने हुए हैं और वो उसमें देख सकते हैं. फिर इसके बाद टेलिंग द स्टोरीज, अगेन वीडियो जो है वो स्टोरी टेलिंग के लिए भी बहुत अच्छी तरह से यूज होती है कि somebody is telling और इसके साथ साथ उसकी जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स दे आर लुकिंग एट. फिर मोटिवेटिंग लर्नर, सो लर्नर्स दे गॉट मोटिवेटेड और उसके बाद वो बिकॉज व्हेन दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो वो फिर उनकी मोटिवेशन ज्यादा हो जाती है. हिस्टोरिकल फुटेज और डेमोन्स्ट्रेशंस जो हैं ये भी आप देखें, जैसे हिस्ट्री को हम नहीं देख सकते, आप हिस्ट्री इज द पास्ट दैट हैज गॉन, लेकिन अब आप हमने बहुत सारी ऐसी मूवी वीडियोज हैं जिनके थ्रू हमने हिस्ट्री को अंडरस्टैंड किया है और लेकिन उससे हमारी इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ है. इसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिंग समथिंग, कुछ कोई प्रोसीजर्स हैं, जो मेथड्स हैं, जब हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो वीडियो उसकी जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है. So what are the advantages of the videos? So video learning control pace of learning. Up, this is very important.
देखिए, we all know as a teacher कि we have 3 categories of student in each class. Number 1, those who are high achievers. Number 2, those who are the average students. And number 3, कौन से slow learner होते हैं. अब slow learner students, they don't have any physical or mental disability, but still they lag behind. अब रीजन क्या है? रीजन उसकी वन ऑफ द रीजन ये है कि व्हेन द टीचर टेल देम फॉर वंस एंड देन आस्क देम टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज और सारा कुछ होता है, तो ये वो टाइप के लर्नर्स होते हैं जो कि उसके साथ कोप नहीं कर पाते. एक दफा के बताने से, एक दफा की चीज को सीखने से उनको नहीं समझ में आता. दे हैव टू सी इट नंबर ऑफ टाइम्स, बार 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 बार. तो वीडियोस जो है ये कंट्रोल करती है पेस ऑफ लर्निंग को कि यू कैन प्ले द वीडियो, play and replay the video so that it helps the student to understand the concept more. बार बार उसको देखेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. तो वो फिर अगर जो एक्टिव लर्नर्स हैं, हाई अचीवर्स हैं, वो एक दफा वीडियो को देख के याद कर लेते हैं. तो मे बी जो 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 लो अचीवर्स होते हैं वो उसको नंबर ऑफ टाइम देखना पड़े. तो लेकिन इट विल हेल्प देम. फिर इसी तरह से वीडियो लर्निंग कैन बी अडेप्टिव टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स. Or for example, if I don't know, are you familiar with the concept of the multiple intelligence, where the Harvard Gardner said that it's not something which we say कि IQ level है. So IQ is not something static or one thing. So it's a combination of the different things. इसको उसने multiple intelligence कहा कि the people according to their potential they have the different characteristics and the feature. तो ये वाली जो वीडियो है ये एक विजुअल उसके अंदर आता है. तो उसके अंदर वन ऑफ द लर्निंग स्टाइल ये है कि द स्टूडेंट डोंट अंडरस्टैंड व्हेन दे बीइंग टॉट वर्बली ओनली, बट दे अंडरस्टैंड व्हेन दे आर बीइंग शोन समथिंग. तो उसके लिए वीडियो जो है लर्निंग कैन बी अडेप्टिव एट द डिफरेंट स्टाइल. यानी वो स्टूडेंट जो है उनको विजुअल जो है वो एक्सपीरियंस देते हैं. वैसे तो ये अजान की बात अच्छी बात है, लेकिन आपका माइक ऑन है, तो लेट्स सी अजान सुन लें हम. माइक म्यूट कर दिया आपने. चलें. सो videos, they are portable of course के student can access them anywhere, यानी कहीं पर भी available हो सकती हैं. और इसके बाद also one of the activity which I assign my student is because they have the smartphone in their hand. तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर you can assign your student to make a video. जैसे एक दफ़ा मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये जो हमारे ग्रीनरी है या उसके है उसके ऊपर आप वीडियो बना के लाएं. तो दे कम अप विद ब्यूटीफुल वीडियोस. इसी तरह से लिटरिंग के ऊपर वो वीडियोस बना लेते हैं. सो दैट अगेन वन ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटी जिससे आप उनको इंगेज कर सकते हैं. अब वीडियो अवेलेबल कहाँ है? So all types of the educational videos, they are available at the YouTube. So YouTube is again an immense resource for the teaching and learning. बहुत ज़्यादा उसके अंदर videos जो है वो हमें hundreds and thousands of videos जो है वो available हैं यहाँ पर YouTube पे. So YouTube is a fantastic tool to use and which is hugely beneficial to the teaching community. Access high quality educational instruction videos for free. There are hundreds of high quality videos specifically made for a YouTube audience that are short, snappy and educational. बाकी देखिए कि हम कहते हैं ना कि videos they are good और it helps the student to learn and understand. अब वो video कहाँ है? So जो अगर हम if you look into the YouTube, so YouTube is not for the purpose of entertainment only. So we could find the millions of educational videos on YouTube. YouTube के ऊपर हम कोई भी चीज टाइप करके देखें हमें उससे रिलेटेड बेशुमार वीडियोस जो है वो मिल जाती हैं. हमें we don't have to buy something, we don't have to spend any money for the videos. हमने सिर्फ we need to
गो टू द यूट्यूब और अपने टॉपिक के उसके ऊपर डालें तो हमें हर तरह की वीडियोस जो है उसके ऊपर अवेलेबल होती है फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस. सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एज एन एग्जांपल शो करती हूँ. यूट्यूब तो सभी यूज करते हैं, है ना? क्या ख्याल है? यस मैम. यूट्यूब तो इज अ वेरी कॉमन थिंग. मतलब उसके अंदर ये तो कोई एक नई चीज नहीं है या क्या है. सो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस मैम हो रही है. अच्छा, अब हम लिखेंगे यहाँ पर अगर हम यूट्यूब का लिखते हैं तो ये यूट्यूब की साइट है. अब आपको क्या चाहिए, व्हाट यू नीड फ्रॉम द यूट्यूब, या आप अपना कोई भी टॉपिक, एक तो यूट्यूब पे डायरेक्ट जाएंगे, या आपका कोई भी टॉपिक है जिसको कि आप यूट्यूब की वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. देखना चाहें अगर हम तो वो लिंक लिख दें, वही लिख दें. जैसे फॉर एग्जांपल आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो आपको अपने स्टूडेंट्स को सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाना है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाना है, क्योंकि आप उसको लिख दें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन सिस्टम ऑफ यूट्यूब. और आपने जब इसको सर्च किया तो आप ये देखें कितनी बेशुमार वीडियोस उस सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं. नजर आ रही है ना? बेशुमार लिंक. और फिर आप फिर देखें जी बिल्कुल. और इसके बाद आप देखें ऊपर भी हैं, और लेकिन नीचे भी अगर आप इसके आप पर आते हैं जो गूगल लिखा हुआ है उसमें भी देयर आर, आप वी कांट काउंट कि कितनी है यहाँ पर, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ. तो आप उसमें जो भी आपको व्हाटएवर यू फाइंड रेलेवेंट, सो फ्री ऑफ कॉस्ट. अब आपको जितनी भी आपको डिटेल्ड ओरिएंटेशन चाहिए या किस तरह की भी चाहिए तो आप उसको क्लिक करें तो वो वीडियो आपके लिए प्ले हो जाती है. और एजुकेशन के किसी भी टॉपिक पे, कोई सब्जेक्ट है आपका, आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, साइंस है, कुछ भी है, तो अब आप उसके ऊपर वो बेशुमार चीजें आपको मिल जाती हैं. सो दिस इज हाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम की जो वीडियो है. The circulatory system comprises blood, blood vessels, and the heart. The heart is the central organ for pumping the blood throughout the body. Heart is made up of strong cardiac muscles. Heart pumps liquid blood, a tissue which transports nutrients, gases, waste, etc. along with it. The right upper atrium receives deoxygenated blood from whole body, which is pumped into right ventricle below, and it sends the blood to lungs for oxygenation via pulmonary artery. After oxygenation, blood travels through pulmonary vein and is received in upper left chamber, that is left atrium, which pumps it into left ventricle below. Then it is pumped into aorta, which is source many arteries which carries oxygenated blood to different parts of body. Arteries get divided into very narrow blood capillaries where exchange of substances takes place. Capillaries forms a web-like network to reach maximum. So this is how it is. So means to say that this is the blood circulatory system is something which you can't show to your students. आप उनको कहीं पर दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन through the videos animation
they can understand it well. Okay, yes, how the process is going on and how in order to and help them to understand. अब आप देखें ये कितना बड़ा benefit है कि वो processes जो we can't see through the naked eye, हम नहीं उसको किसी तरह से भी देख सकते हैं, but through the videos, through the animation जो है आप उसको दिखा सकते हैं. So it will help your learners टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये काम किस तरह से होता है. लेक्चर जो है वो उतना इफेक्टिवली इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकता एज कंपेयर टू अ वीडियो. सो it's a fantastic tool. There are lots of educational videos available on the YouTube, और आप इसके अंदर access of high quality educational instruction for free. यानी आप you don't have to spend a money, सिर्फ आपको क्या चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए. So there are use of short clip for the documentaries to provide context to a topic. अब छोटे short clips वो दिए हुए होते हैं किसी प्लेस के, कुछ है आपने किसी प्लेस के बारे में पढ़ाना है तो आप can show them the video first and then the students can relate it with the facts or the realities और आपके teaching के साथ वो होंगे. So YouTube EDU इसको note कर लें. This is the site where you can find numerous educational videos. यानी एक तो YouTube सिंपल है, एक है YouTube EDU. So ये वो वेबसाइट है जहां पर आप एजुकेशनल वीडियोस हैं उसमें से ले सकते हैं. So again engage visual learners with your lesson and the content. So through the videos you can engage your students in your lessons. So then again, what is the other benefit of YouTube? Can set an assignment that requires student to research and make their own videos to be later played in the class. So this is a very practical and useful activity. I did it many times with my class कि मैं उनको जो टॉपिक्स पढ़ा रही होती हूँ उनमें से किसी ना किसी के ऊपर जो है मैं इनको कहती हूँ अच्छा चलिए जी अपनी वीडियोस बना के लेके आए. So वो अपने मोबाइल को ही यूज करते हुए वो वीडियोस बना लेते हैं. So again keeping them busy with the productive and constructive activities. So then step by step explanation of the problematic equation. For example, अगर आप कोई processes के बारे में बता रहे हैं, कुछ demonstrate कर रहे हैं, तो आप वीडियो के थ्रू जो है एक एक स्टेप करके जो है उस चीज को सीख सकते हैं. इसकी एग्जांपल मी एज अ फीमेल आपको दे सकती हूँ कि जब हम कोई चीज नई चीज कुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, अच्छा चलिए जी नेट के ऊपर देख लें कि वो उसकी रेसिपी क्या है, वो कैसे कुक होती है. तो अब देयर आर अगेन अगर हम कुकिंग से रिलेटेड जाते हैं तो इतने तरह के शेफ्स हैं, पीपल हैं जिन्होंने बहुत सारी तरह की जो फूड्स हैं उनको प्रिपेयर किया हुआ है आपके सामने एंड दे शो ईच स्टेप वन टाइम and then you do it accordingly. So then video, they are used as a writing prompt as well. So video can be an invaluable resource when planning to creative writing. यानी एक कोई चीज दिखा दी और इसके बाद स्टूडेंट से कहा कि आप इसके बारे में लिखें. So you can develop the creative writing habits among your students, which we seriously lack. हमारे लोगों में क्रिएटिव राइटिंग बहुत लैक करती है, हर चीज को रट्टा लगा के हम याद करने की आती है. सो इस तरह की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है. और इसी तरह से जो अगर आपने कोई रिसर्च का कॉन्सेप्ट या उसको अंडरस्टैंड कराना है तो भी बहुत ज्यादा हेल्प. सो वीडियोस दे आर द इमेंस रिसोर्स. मेक अ हैबिट ऑफ एडिंग वीडियोस टू योर टीचिंग. ईदर यू आर टीचिंग ऑनलाइन और टीचिंग फेस टू फेस, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं. एंड इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, आई रिमेंबर कि देयर वाज एन एग्जांपल ऑफ अ टीचर जो कि किसी बहुत रिमोट एरिया में गांव में किसी में पढ़ा रहा है अपने स्टूडेंट्स को और उसके पास अपना एक स्मार्टफोन है. अब वो क्या करता है, बिकॉज इज मोटिवेटेड है, वो बिलीव करता है, उसकी इंटेंशंस हैं, वो उसको यूज करना चाहता है, वो अपने उसी स्मार्टफोन के ऊपर जो है वो उनको वीडियोस दिखाता है स्टूडेंट्स को फॉर रिलेटेड टू द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. So we can create a lot of difference using these digital things. अब फिर इसके बाद there is another thing which is also very useful and helpful, that is called blog. blog करना सुना है आपने कभी इससे पहले? blog क्या होता है? Blog means a website. A website. Sort of a website. No, madam. Website ही है. Blog mean a piece of writing on experiences. Exactly. Madam. So the blogs जो होते हैं, these are written by the experts or researchers, teachers. So they used to write or share their information with our. So blog is basically a very informative and resourceful site
जहां पर हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं. सो इट्स अ शॉर्ट फॉर द वेब लॉग. सो वेब लॉग इज एक्चुअली द वर्ड जो कि होते होते ब्लॉग बन गया, और उसके अंदर क्या होता है कि इट्स लाइक एन ऑनलाइन डायरी और अ जर्नल. So blogs, they are not necessarily private, instead they are created for an audience. यानी एक तो होती है ना कि पर्सनल डायरी है जो आपके अपने लिए ही होती है and you don't want to share with anyone, लेकिन ये होते हैं कि these are created for the audience, जिससे कि जो कि benefit कर सकते हैं. और it is just like a diary, और जिसमें कि आप you add your information. टीचर्स जो हैं, अगर आप अभी नेट पर सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे टीचर्स के ब्लॉग्स नजर आते हैं जहां पर टीचर्स दे आर शेयरिंग देयर इंफॉर्मेशन, they are giving assignments to their students. So they are really informative. So blogs are written in all kinds of topics from A to Z. कुछ किसी पर भी आप सर्च करके देख लें. So reader can usually leave comments which lead to the discussions about the blog's content. For example, a blog about flipping your classroom can lead to a discussion between novice and the experienced teachers about the common questions, advice, tips, and clarification. So that means that the blogs, they can generate discussions as well. Discussions among those who are experienced and those who are not very much experienced. So unme generation, or wo, they can learn from each other. So there are the different, अगर हम देखते हैं, researchers हैं, scientists हैं, teachers हैं, जिन्होंने अपने अपने experiences के ऊपर lots of blogs हैं, और ये एक बड़ा source of information है for learning purposes के लिए. आप खुद भी benefit कर सकते हैं और अपने student को भी benefit करा सकते हैं. So the क्या क्या use कर सकते हैं, कैसे हम blogs को, teachers can use blogs to publish their assignments. रिसोर्सेज, जैसे आपने अपने स्टूडेंट्स को कोई वीडियो ही दिखानी है, कोई आपने उनको कोई ऐसा मटेरियल, रीडिंग मटेरियल उनको देना है, कोई एक्सरसाइज ही देनी है, तो आप अपने ब्लॉग के ऊपर पब्लिश कर दें, आपके स्टूडेंट एक्सेस कर लेंगे. सो कीप स्टूडेंट्स एंड इवन पेरेंट्स अप टू डेट ऑन द क्लास इवेंट्स, ड्यू डेट्स, कंटेंट बीइंग कवर्ड, ये सारी चीजें जो है वो आप ब्लॉग के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दिस इज रियली यूजफुल. Teachers can also use blogs to help students master content and improve their writing skills. यानी वो जब उनको, फॉर एग्जांपल, आप अपने स्टूडेंट्स को असाइन करें कि आप अपना एक ब्लॉग क्रिएट करें किसी भी टॉपिक के ऊपर, या अपने बारे में एक सर्च लिखें, तो इट हेल्प देम टू राइट. जो हम कहते हैं ना, हमारे बच्चों की जो राइटिंग स्किल्स जरा थोड़ी पुअर हैं, मतलब वो क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकते, रट के तो लिख ही लेते हैं. तो आप अपने स्टूडेंट्स को गिव देम दिस एक्सरसाइज, और वो उसके अंदर राइट जब करते हैं तो उनकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं. Students can use blogs to publish their writing and educate others on a particular topic, and students can also create blogs for their sports and the other co-curricular activities. अपनी उसके अंदर एक्टिविटीज को शेयर कर सकते हैं. अब असल में कम टू द पॉइंट कि आप कैसे कर सकते हैं ना, ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स जहां पर आपके ब्लॉग्स जो हैं जो पब्लिश कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं. So edublog.com is the #1 site for education blogs. यहाँ पर आपको बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड ब्लॉग्स जो है वो मिल जाते हैं. इसी तरह से वर्डप्रेस जो है इज अ साइट जहां पर आप देखिए, आपने अगर अपना एक ब्लॉग क्रिएट किया है तो उसके लिए यू नीड अ स्पेस ऑन द इंटरनेट. आपको वो स्पेस चाहिए होती है ना, कहाँ लिखेंगे आप अपना ब्लॉग, कहाँ पर पब्लिश करेंगे. तो वर्डप्रेस जो है ये आपको, दे प्रोवाइड यू अ फ्री स्पेस, फ्री ब्लॉगिंग साइट है, और जहां पर आप अपना, इफ यू हैव क्रिएटेड योर ब्लॉग, तो आप इसके ऊपर इस वेबसाइट में दे दें तो वो आपका ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा, एंड देन इट विल बी विजिबल टू द ऑडियंस और रीडर्स के लिए आपने क्रिएट किया हुआ है. तो ये इस तरह से आप इसको अपने ब्लॉग को खुद भी करें और गिव योर स्टूडेंट द हैबिट, बिकॉज आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं वो जाहिर है ग्रोन अप्स हैं, बड़े हैं, तो दे कैन डू दैट. तो अब देखिए, the point of focus is this, of all this discussion, of all this technology क्या है, कि my point is, this is my purely my point of view, कि ना अब in this information age, students, they are using this technology just for the sake of entertainment. मैं ये कहती हूँ कि वो उसको सिर्फ गेम्स खेलने के लिए या मूवीज वॉच करने के लिए या उसके ऊपर टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या चीजें करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं, which is really a misuse of this technology, I must say. It is not giving them anything except for the waste of time
और टाइमली प्लेयर, जिसके अंदर वो घंटों बैठे रहते हैं और उनको होश ही नहीं होती कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है और उनकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं. So the point is that we have to make them in a habit of use this technology for the sake of good. Not only good for themselves, for the good of the nation as well. कि when they use it for the constructive and productive purposes, वो सीखेंगे, they develop the good understanding of the concept. ये सारी चीजें जब कर लेंगे तो it will really help them to learn. उनको सीखने में, बहुत सारी काम करने में बहुत help मिलेगी. So this was the blog. और फिर उसके बाद there is another task or activity or the site जो कि web quest है. So the web quest is a very interesting task. Is an inquiry oriented lesson format in which most or all information that learner work with comes from the web. And then the model was developed by the Bernard Dodge at the San Diego State University in February 1995. ये जो बर्नी डॉज था, इसने इसको वेब क्वेस्ट को क्रिएट किया. ये एक समझ लें एक इंक्वायरी ओरिएंटेड लेसन है, बट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द हार्ड कॉपी, बट ये ऑनलाइन है और इसके ऑल द रिसोर्सेज जो है, रीडिंग है, हर चीज है, ये वेब फॉर्म में है उसके ऊपर. अब ये क्या है कि इट्स एन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग टूल which encourages students to become responsible for their own learning. Students are provided with a specific task and the activities to support that task. They are given links to information available on the web which they use to acquire knowledge. और ये देखिए जो वेब क्वेस्ट है, ये एक्चुअली जिस तरह हम एक लेसन बनाते हैं ना, लेसन प्लान करते हैं अपना, कि जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि पूरा एक आपका एक टॉपिक है जिसमें आपने ये देखा है कि अच्छा ये कुछ इन्होंने पढ़ना है, ये एक्टिविटीज करनी है, तो यू असाइन दैम, आप उनको असाइन कर देते हैं और उसके बाद उसके अंदर एवरीथिंग इज देयर, रीडिंग मटेरियल के लिंक भी हैं और एक्सरसाइजेस भी हैं, सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है. तो स्टूडेंट डू इट एट देयर ओन. कोई एक्टिविटीज, कोई असाइनमेंट जो है वो खुद से उसको करते हैं, बट ऑन द इंटरनेट, वेब उसके ऊपर. तो उसके अंदर गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की होती है, डिस्कशन वाली प्लेस भी होती है. तो वेब क्वेस्ट जो है भी आप, इफ यू क्रिएट योर ओन वेब क्वेस्ट ऑफ एनी टॉपिक, कोई एक टॉपिक है जो आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है या ये स्टूडेंट दे शुड डू एट देयर ओन, तो आप उसका एक इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक लेसन प्लान बना के अपने स्टूडेंट को असाइन कर दें कि इसके अंदर सारी गाइडलाइन दी हुई है, जो एक्टिविटीज आती हैं उसको करें और देन सबमिट टू द टीचर. तो दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर द लर्नर्स कि वो उनको खुद से इंक्वायरी बेस, यानी खुद से वो सीखने का उनको मौका मिलेगा. सो द वेब क्वेस्ट क्या होता है कि बर्नर्ड डॉज ने इसके 6 मेन उसके स्टेजेस भी बताए, उसके कहा कि 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. वो क्या है कि सबसे पहले उसके अंदर क्या होता है, इंट्रोडक्शन, ओरिएंट स्टूडेंट्स एंड कैप्चर्स देयर इंटरेस्ट. पहले जो भी आपने जिस टॉपिक पे ये वेब क्वेस्ट क्रिएट करना है, आप उसका एक इंट्रोडक्शन लिख देते हैं कि व्हाट दिस इज अबाउट. देन आप टास्क डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट. फिर आप उनको ये बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन से टास्क जो है उसमें करनी है, कितने जो है ना वो असाइनमेंट्स और उसके अंदर वो करनी है. देन प्रोसेस एक्सप्लेन स्ट्रेटजीज स्टूडेंट यू यूज टू कंप्लीट द टास्क. अब वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ दे आर गोइंग टू डू दैट टास्क, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके उन्होंने करना है. देन रिसोर्सेज, वेबसाइट स्टूडेंट विल यूज द कंप्लीट टास्क, कि वो कौन कौन सी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं. देन evaluation measures the results of the activity and then conclusion. So everything is there in one web quest. So it is the independent learning भी है for the learners कि वो they are doing and then उनकी evaluation भी हो रही है उसी तरह से, और it is being summed up कि अच्छा क्या ये सारा what this topic is all about. So again this is the website जो है www.webquest.org. ये is a website where you can found many web quest, but you can create your own web quest as well. आप अपना भी create कर सकते हैं इसमें. Then we have wiki. Wiki का नाम सुना है कभी आपने? What is a wiki? It's from Wikipedia. 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 Yes. बिल्कुल सही है. So ये this is the word, the term which is familiar to us is the Wikipedia. So the wiki is a collaborative learning tool. ये individual से ज्यादा
it is a collaborative learning. Many students can learn together. So wiki can be defined as a system that allows one or more people to build up a corpus of the knowledge in a set of interlinked web pages using a process of creating editing pages. यानी उसके अंदर क्या है कि आप ग्रुप जो है और 2 से ज्यादा लोग जो है उसके अंदर सीख सकते हैं, आप उनके ग्रुप बना के. It provides the facility of editing the page, creating the page, adding the resources, delete करके वो जब आप ग्रुप वर्क में काम कर रहे होते हैं. So wiki can be defined as a web-based tool on which users collaboratively add, delete, modify content directly from the web browser. जैसे आपने अगर एक ग्रुप टास्क दे दिया स्टूडेंट्स को, अब आप वो कुछ एक हर स्टूडेंट अपनी अपनी टास्क करके ला रहा है, लेकिन जब डिस्कशन हो रही है तो वो एक दूसरे से वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये जो तुम बात कह रहे हो ये इससे रेलिवेंट नहीं है, हाँ जो वो बात कह रहा है वो रेलिवेंट है. तो हम वो जो अननेसेसरी बात होती है उसको खत्म कर देते हैं, जो रिक्वायर्ड होती है उसको इंक्लूड कर लेते हैं किसी भी टास्क में. बट दिस इज डन ऑनलाइन. विकी एक प्लेटफॉर्म है. जी मैम विकी जैसे आपने कहा कि कोलैबोरेटिव टूल है, तो ये आजकल बहुत से जैसे मूक एक टर्म जो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज रिनाउंड यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड करा रही हैं, तो उसमें भी विकी का एक ऊपर वो शामिल होते हैं जिसमें यू कैन इंटरेक्ट विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कई दफ़ा इसी विकी पे ही आप कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग योर ट्रेनर्स और टीचर्स, और ये बड़ा इफेक्टिव टूल है. जी, very good, excellent example. So I really appreciate. So this is how it is being used. और even देखिए फेस टू फेस क्लास, मूक्स तो ऑनलाइन कोर्सेज है ना. आप जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना देती हूँ विकी पे, मैं कहती हूँ ग्रुप डिस्कशन के लिए गो टू दैट लिंक और डू डिस्कस विद ईच अदर. अब उस द बेनिफिट हमारे लिए क्या है कि वहां पर व्हेन दे डिस्कस तो उसमें लाइव चैट नहीं है, लेकिन दे कैन राइट. जब वो राइट करते हैं तो आप उसके बाद उसको अगर आपने कोई असाइनमेंट या वो दी है तो आप उनका ट्रैक रख सकते हैं. फिर मुझे जो एक और बेनिफिट लगता है उसके अंदर फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस कि जब आप ग्रुप वर्क असाइन करते हैं ना, फॉर इंस्टेंस आपने 4 स्टूडेंट्स या 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना दिया एंड यू हैव असाइन द टास्क टू देम, तो उसके अंदर होता क्या है कि 4 लोग तो काम कर रहे हैं, एक काम नहीं कर रहा, वो बेनिफिट कर रहा है कि अच्छा जो बाकी लोग काम करेंगे. तो इस तरह से बिकॉज कि यहाँ पर रिटन काम होता है तो आप वो जो फ्री राइडर्स या जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं उनको डिस्करेज कर सकते हैं कि वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे तो सामने आ जाएगा, नहीं करेंगे तो ये होगा कि इसने कोई काम नहीं किया. सो दिस इज हेल्पफुल इन दिस वे एज वेल. So wiki can increase educational productivity. Wikis support collaborative learning because wikis can enable groups of the students to work together to solve a problem, complete a project, etc. यानी वो कोई भी आपने टास्क उनको असाइन किया जो ग्रुप टास्क है तो वो उसको कर सकते हैं. और इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है कि व्हेन दे सॉरी थोड़ा सा पानी. So productivity means that they can come up with the different ideas, different writings, different solutions of the problem. So the using wiki effectively may help your student reach Bloom's higher order skills, that is creating evaluation. जो Bloom's taxonomy अगर आप में से कोई familiar है, जो कि कहती है कि जो base है वो knowledge है और highest जो है वो creation और evaluation है, तो आप you can take your student to that level कि they could do something at their own rather than they are just always wait for the teacher to say something और उनको कुछ बताए, notes दे दे या वो book में से पढ़े kind of stuff. So wiki promote active learning where students can actively participate in educational activities, writing, discussion, and everything. Again, involving students productively. So wikis can also help you to create interactive learning environment where they can interact with each other. And wiki can also help you to promote open dialogue and encourage community building. And then wikis can help you prepare your students for the 21st century marketplace by developing digital literacy skills. Wiki mein they can write, they can upload files, they can upload videos, they can upload audios. So they learn when they work on this web. तो वो उसकी जो digital literacy है वो भी skills जो है उसको भी सीखेंगे. और they also can improve the writing skills. Again हमारा बहुत ज़्यादा focus writing पे मेरा तो इसीलिए है कि मैंने तो यूनिवर्सिटी लेवल पर भी देखा है कि जो सबसे पुअर चीज है वो स्टूडेंट की राइटिंग है. एक लफ्ज खुद से नहीं, एक सेंटेंस नहीं खुद से लिख सकते.
So that is how हम उनको इस तरह के exercises से उनके ये skills जो है ना enhance कर सकते हैं. So when to use wiki? You can use wiki for the following types of the activities, जैसे research projects हैं. अगर आपने एक छोटा सा कोई mini research project assign किया तो आप उसका group बना दें, तो they can contribute individually, उसके अंदर वो करेंगे. फिर इसी तरह से reading comments हैं. For example, I think हमारे यहाँ इतना habit नहीं है, but based on my experience when I was doing my PhD from King's College London, so we used to have the reading groups होते थे. उसमें क्या होता था, we do decide कि अच्छा इस दफा कौन सी book पढ़ के आनी है या कौन सी चीज पढ़ के आनी है. So then we have a discussion on it. कि what your point of view about that or kind of stuff. So the reading comments जो हैं उसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं. Class summaries हैं, अगर आपने पूरी class लिया फिर उसके बाद how to summarize it वो भी हो सकता है. As a notebook use कर सकते हैं. Discussion activities हैं. Creating collaborative stories हैं. Peer feedback, resource repository, teachers can publish instructional material. So these are all the point that for which you can utilize the wiki. Peer feedback के लिए भी हो सकता है, collaborative stories उसके लिए भी हो सकता है. So there are, depends on the nature of your topic, your subject, you can utilize the wikis in a many different ways. अब how to use? अब how to use means कि to use wikis, some tips they are needed. Set clear rules and expectations. Yani when you assign some topic, some project, something on a wiki, so your rules or expectations बड़ी clear होना चाहिए कि what they are expected to do. ये बड़ी clear होनी चाहिए कि ये end में उनको एक story लिखनी है या end में उन्होंने कोई research activity में उसका कोई solution लेके आना है. So that should be very clear. So let students know what you expect and how students' work will be evaluated. और then include detailed instructions. और फिर उसके बाद आप उसके अंदर पूरी डिटेल वो बता दें कि how to do and उसके अंदर maybe आप भी उनको लिंक दे सकते हैं बहुत सारे रीडिंग मटेरियल के. Authentic assignments दें उनको, clearly define students' roles and the activities. Each role जो हर एक का define कर दें कि क्या क्या उन्होंने करना है, किस किस तरह से करना है. Closely monitor students' activity because on the wiki आप you can monitor their activities as well. आप उनको जो है ना वो as a teacher because you have created that space तो आप उनकी activities को बहुत अच्छा monitor कर सकते हैं. Ask students to review and comment on each other's entries and then encourage interaction and become familiar with wiki yourself. ये सबसे important point है कि सबसे पहले हम familiar होंगे wiki के साथ तो ही हम अपने student को काम करा सकेंगे. But you can use it in a very different situations. So then कहाँ से wiki, अब आप कहें मैडम इतना बताई जा रही है wiki होता क्या, कहाँ से लेना है? So it's very easy. So Wikimetrics is a website which has number of wikis available. एक wiki नहीं है, Wikipedia उसकी एक form है ना. There are many wiki, PB wiki, Zoho wiki, कौन से हैं, बहुत सारे number of wiki है. वहाँ से आप अपने लिए if you want to have that interface for your students कोई एक अपना wiki select कर सकते हैं. Wikimetrics है, उसके अंदर every wiki की पूरी डिटेल बताई गई थी. उसके अंदर स्पेस कितनी, आप कितनी चीजें उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कितने ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. सो डिफरेंट बेनिफिट्स, डिफरेंट फीचर्स जो हैं आप उसके विकी मैट्रिक्स से जो है वो लोकेट कर सकते हैं और अपना एक विकी स्पेस क्रिएट कर लें. उस विकी स्पेस से ये होता है कि आप जो है ना वो अपने स्टूडेंट्स को उनके ग्रुप बना सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं और इसी तरह से यू कैन गेट देम बिजी विद दिस एक्टिविटीज एंड ऑल दैट. सो यू कैन सर्च विकीमेट्रिक्स, सर्च करें और उसके बाद आप अपना एक अपने लिए बेनिफिट के लिए उसको विकी को सेलेक्ट करके अपनी स्पेस क्रिएट कर लें एंड देन असाइन सर्टेन एक्टिविटीज. अब देखिए अगेन द पॉइंट इज दिस, एंड वाली जो बात है वो ये है कि अब we are now in this age of the electronic gadgets. Students, every learner are now in a habit of playing with them. उनके हाथों में है, स्मार्टफोन उनके पास है, टैब्स उनके पास हैं, लैपटॉप्स and everything they access. अब they are not the students like us, like you, those who were being taught through the blackboard or the whiteboard. Up, they want to see everything in a visual way, in some activity way.
तो अब हमारे लिए चैलेंज है, वी एज अ टीचर, द चैलेंजेस ऑफ अस कि हमने इस लर्नर को कैसे एंगेज करना है। अब हम एक बड़ा एक लूज सा एक यूजुअल सा एक कमेंट कर देते हैं कि बच्चे तो आजकल पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। देखिए वो क्यों पढ़ना चाहेंगे? उनको जो दूसरी एक्टिविटीज हैं ऑन दीज गैजेट्स, उनको गेम इंटरेस्टिंग लग रही है, उनको मूवी वॉचिंग इंटरेस्टिंग लग रही है, तो वो उस बोर्ड से स्टडी के पास क्यों आएंगे जो कि उनको टोटल एब्स्ट्रैक्शन में या पैसिव क्लास में सिर्फ बैठा के लेक्चर दे के कराना चाह रही है? वो क्यों इंटरेस्ट लेंगे? Problem is not with the learner, problem is with us कि we are not engaging them productively, constructively, and we are not creating a link with their studies. वो लिंक जो है ना वो हम क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। तो वो बच्चे परेशान हैं, बच्चे भी पूछे हमसे, वो भी परेशान हो, कहते समझ ही नहीं आता टीचर क्या पढ़ा रहा है, समझ ही नहीं आता। So if we show them through the videos, if we make their groups to discuss, if we involve them in certain activities जो कि अपने खुद से उनको करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो उनकी लर्निंग अच्छी होगी, इन्वॉल्वमेंट भी होगी, तो हम वो टाइम जो वेस्ट करते हैं ऑन प्लेइंग द गेम्स एंड मेकिंग अननेसेसरी वीडियोस, और एक वीडियो बना ली फिर बड़े फख्र से बताते हैं मैंने टिकटॉक पे अपलोड कर दिया, मैंने ये कर लिया, उस टाइम को हम कट कर सकते हैं। Because when they will be busy constructively with their study activities, तो फिर उसके लिए उनको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन उनके लिए कंफर्ट लेवल क्या है कि दे आर वर्किंग ऑन देयर विद देयर गैजेट्स, उन्हीं पे काम कर रहे हैं। हम उनको उस तरफ नहीं लेके जा रहे हैं जो उनको बोर लगता है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रीथिंक, वी नीड टू रीथिंक आवर रोल्स कि अब इन द 21st सेंचुरी हमने डिसाइड करना है कि हमारा रोल क्या है। सो अब कहते हैं ना कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द रोल ऑफ द टीचर हैज बिकम द फैसिलिटेटर। वो कोई डिक्टेटर नहीं है जो हर वक्त उसको इंफॉर्मेशन देता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन, होप यू फाइंड इट यूजफुल। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी मैम बहुत अच्छा समझाया है आपने, क्वेश्चन ज़हन में नहीं आ रहा है, वो सब क्लियर है माशाल्लाह जो आपने पढ़ाया है। एंड होपफुली आई रियली जी। अच्छा मैम, मैं एक क्वेश्चन आपसे मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि विकी जो है ये समटाइम्स अब हम क्रिटिकल डोमेन्स में देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कि सब इंफॉर्मेशन जो है ना विकी लीक्स के जरिए हमें पता चल रही है, सच एंड सच ऐसे हो रहा है। तो क्या इसमें प्रोपोगेशन के लिए फेक इंफॉर्मेशन भी अपलोड की जाती हैं या कुछ ऐसे ग्रुप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ ब्रिलियंट काम करते हैं कि जिससे इसको मतलब फ्रेंडली किया जाए कि वैसे ये इंफॉर्मेशन हमें इम्पार्ट कर रहे हैं कि वो बिल्कुल वैलिडेशन के लिए ऐसे करेक्ट है या मतलब रहूँगा। अच्छा, लेकिन उसमें ना जो विकीपीडिया है ना बेसिकली, वो विकीपीडिया तो है, मतलब उसके अंदर उसने इंफॉर्मेशन जो है ना उन्होंने अपलोड किया। अब आप देखें कोई टॉपिक आप सर्च कर लें उसके ऊपर विकीपीडिया पे वो जरूर लिंक एक निकलता है उसका। अब जो हम जब एज अ एकेडमिक राइटिंग के अंदर या अपने एकेडमिक ऑथेंटिसिटी की जब बात करते हैं ना, तो हम विकीपीडिया की इंफॉर्मेशन को कभी भी ऑथेंटिकेट नहीं करते। यानी अगर हम उसके रेफरेंस को, उसके सोर्स को हम कभी भी ऑथेंटिक कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट रेफरेंस बेस्ड, दीज आर रिटन बाय द इंडिविजुअल्स, दैट इज अ डिफरेंट एक्टिविटी, वो एक और चीज है। यहाँ पर जो आज बात हुई है वो हुई है कि हमने विकी को अपनी क्लासरूम एक्टिविटीज के लिए स्टूडेंट को एंगेज करने के लिए यूज करना है, उसके फीचर्स को। ठीक है, मतलब वो क्रिएट करें खुद से कंटेंट, वो उसको देखें। सो ये वो बनेगा। ठीक है जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपने डिजिटल लाइब्रेरी का जिक्र किया था, तो डिजिटल स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी कैसे एंगेज कर सकते हैं, उनको कोई एक्टिविटी मतलब कैसे दे सकते हैं? डिजिटल लाइब्रेरी के हवाले से उस तक जब रसाई करनी है तो वो हम किस तरह करेंगे? देखें, आपकी सबसे पहले तो जो डिजिटल लाइब्रेरी है ना, वो तो जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है उसके पास भी पहले एक बड़ी वुडन उसके अंदर वो होती थी जिसमें कार्ड पड़े हुए होते थे और ये था सारा, लेकिन अब उन्होंने उस सारे सिस्टम को डिजिटाइज कर दिया। जितनी बुक्स भी लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उन्होंने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू
उसमें अंदर सेव कर लिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि हमें उसमें किसी भी ऑनलाइन भी और वैसे भी जाकर भी हर लाइब्रेरी के अंदर एक कैटलॉग कंप्यूटर पड़ा होता है, कैटलॉग कंप्यूटर पड़ा हुआ होता है। अब आप उसके अंदर जो भी बुक आपने सर्च करनी है, अगर आपको बुक का नाम पता है या आपको किसी ऑथर के नाम से, जब आप उसके अंदर उसका नाम डालते हैं तो वो बुक अपीयर हो जाती है, उसके साथ उसका पूरा लिंक पड़ा हुआ होता है कि ये कौन से नंबर पे किस जगह पर मौजूद है। सो डिजिटल लाइब्रेरी इस तरह से हेल्प करती है लाइब्रेरी में, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त पूरी दुनिया में हर ऑर्गेनाइजेशन की को एक्सेस उन्होंने दी है ई लाइब्रेरी पे। ई लाइब्रेरी जैसे अभी HEC भी एक्सेस देता है हमें ई लाइब्रेरी पे, जिसमें बेशुमार बुक्स हैं ऑनलाइन, बहुत सारे रिसर्च जर्नल आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर, बहुत सारी चीजें इस तरह की जो स्कॉलरली चीजें ई लाइब उसमें मौजूद है। वो हर यूनिवर्सिटी को उन्होंने एक्सेस दी हुई है, उसके कुछ पासवर्ड्स हैं। जब हम उसको यूज करते हैं तो हम इसी तरह से कोई सर्च डाल लेते हैं तो वो सर्च उसके अकॉर्डिंगली वो आ जाती है। तो इट्स अ ग्रेट सोर्स, बहुत बड़ा रिसोर्स है ये ई लाइब्रेरी जो है। तो इस तरह से हम वो इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है, स्टूडेंट्स हमारे बुक्स डाउनलोड करते हैं वहां से, क्योंकि वो उन्होंने उसको एक्सेस दी। ठीक है जी। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, ई लाइब्रेरी की आपने अभी भी बात की है, तो मैडम मेरे जहन में ये आ रहा है कि कॉलेजेस में जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने BS स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हमारे पास मतलब फैकल्टी की शॉर्टेज प्लस बुक्स की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो अगर जिन यूनिवर्सिटी से अगर हम एफिलिएटेड हैं और हम उन यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करें कि वो हमें ई लाइब्रेरी की फैसिलिटी हमें भी ट्रांसमिट करें, ताकि सो दैट आवर स्टूडेंट्स कैन एक्सेस। तो मैडम ये हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बुक्स नहीं है हमारे पास, बजट नहीं है, और ना ही हमें कोई सेपरेट बजट दिया जा रहा है BS के लिए स्पेशली। तो BS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। That is a very excellent point of today's session which you have bring in. जी मैडम, इंशाल्लाह ये हम करेंगे मैडम। हाँ, आप अपने जो आपके जो कॉलेज जहाँ से एफिलिएटेड हैं उन यूनिवर्सिटी से बात करें, दे आर बाउंड टू गिव यू द एक्सेस। और देखें जो ई लाइब्रेरी है उसका पर्पस यही है कि अगर हमारे पास अगर एक रिसोर्स है, एक डेटाबेस बनी हुई है, तो वाई स्पेंड मनी, मतलब अगर किताबें खरीदने में हमें उसको पैसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक्सेस चाहिए। So that will और be मैडम really जी मैडम, लैक ऑफ फैकल्टी और लैक ऑफ बुक्स जो हैं, ये दो ऐसे मेजर क्राइटेरिया जिन पे वो हमें भी एफिलिएट भी कर सकते हैं, और बल्कि करते हैं वो जो मतलब यूनिवर्सिटीज जब भी विजिट करती हैं। तो मैडम आई थिंक द लास्ट पार्ट ऑफ योर लेक्चर वाज द मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग पार्ट, कि आपने हम सबको सेंसिटाइज किया कि वो ये रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म आवर टीचिंग प्रैक्टिसेस, आवर टीचिंग स्ट्रेटजीज। तो मैडम थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन एक्सीलेंट लेक्चर, और thank you very much. इंशाल्लाह हम जरूर कोशिश करेंगे। So that of course I'll be happy if you utilize it practically and found the many ways कि अपने खुद भी और अपने स्टूडेंट्स को भी कैसे इसके अंदर engage करना है। So thank you very much for today and I hope you can get something out of it और इसको practically apply भी करेंगे। So over to the clear about our need for the information, उसकी depth और breadth के बारे में we should be very much clear about the type of information we need. Okay, प्लीज अपने माइक्रोफोन ऑफ रखिएगा ताकि हम बात कर सकें ठीक तरह से। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अपनी ये अगर आप अपनी सामने स्लाइड देखें तो आप देखेंगे कि आप जब इंफॉर्मेशन को तलाश करते हैं तो अप्रोचेस डिफरेंट होती हैं आपकी। मसलन कुछ लोग टाइटल से सर्च करते हैं, जिन लोगों को तो उसके टाइटल का पता है या कीवर्ड सर्च करना चाह रहे हैं तो वो टाइटल में से, सब्जेक्ट में से कोई कीवर्ड दे देंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ऑथर्स का पता होता है, वो ऑथर सर्च करते हैं। अच्छा, जब आपको ऑथर का भी नहीं पता, आपको टाइटल का भी नहीं पता, बट यू ओनली नो इट कि एक टॉपिक है जिसके बारे में मुझे जानना है, यू कैन यूज द डिफरेंट कीवर्ड्स। आप मुख्तलिफ कीवर्ड्स, वही जो लिस्ट हमने बनाई थी, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट सर्चिंग। आई मीन यू डोंट नो द एग्जैक्ट टाइटल। मसलन देखिए, टाइटल बाद का बड़े मुख्तलिफ होते हैं कॉन्सेप्ट से। मसलन देखिए, इशफाक अहमद की किताब गडरिया क्या है, एक नॉवल है, तो उसमें उसका जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट है। जाविया नाम तो बिल्कुल नहीं मैच करता मेरी नीड से, बट द कॉन्टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, द टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, कंटेंट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये सारी बातें ये बताती हैं कि जरूरी नहीं कि आपको बाय टाइटल चीजें मिले, जरूरी नहीं बाय ऑथर मिले। यू कैन सर्च द कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलेगा?
आप जब सही वाले कीवर्ड्स या सब्जेक्ट हेडिंग असाइन करेंगे तो आपको टॉपिक पे चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। फॉर्मल वेज, इनफॉर्मल वेज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि ये कैसे हम लोग तलाश करते हैं चीजें। इनफॉर्मल हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड है, ऑथर से, एक्सपर्ट से, दोस्तों से पूछना, लेकिन मैं आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहती हूँ। आजकल हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का दौर है। Now we people are not suffering from information poverty, but we people are suffering from information overload. So हम उसमें से right information जो है वो तलाश करें। आप सही राइट इंफॉर्मेशन तलाश करें, हमने ये सिखाना है आपको। ओके, सो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें डिफरेंट सर्चिंग टेक्निक्स हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस दूंगी चीज़ों को सर्च करने का। आपको अंदाजा है कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सर्च इंजन जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं सर्चिंग के लिए। गूगल उसमें बड़ा कॉमन है, याहू है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। लेकिन होता क्या है कि ये जो सर्च इंजन्स हैं इनमें थोड़े से डिफरेंसेस के साथ जो सर्चिंग टेक्निक्स हैं या जो क्राइटेरियाज हैं वो सिमिलर होते हैं। तो हम गूगल को एक सिंपल केस बना के चीज़ों को सर्च करते हैं। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं गूगल लिख रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप में से गूगल के यूजर्स मैक्सिमम रहे होंगे। मुझे चैट बॉक्स में लिखिएगा कि कितना आप समझते हैं कि एक्सपर्ट हैं आप गूगल इस्तेमाल करने के हवाले से, या कोई माइक्रोफोन ऑन करके मेरे से बात कर। आप क्या समझते हैं कि आप बिगनर्स हैं, आप एक्सपर्ट लेवल का या एडवांस लेवल का? जी फायजा, यू यूज फ्रीक्वेंटली, बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्किल्स। सो व्हाट डू यू फील और हाउ डू यू रेट योर सर्चिंग स्किल्स? क्या आप समझती हैं कि यू हैव सफिशिएंट स्किल्स टू सर्च द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम? Miss Parveen, you are talking about that we are not expert. That's fine. That's okay to me. हम आपको बिगनर के तौर पे डील करेंगे। बट सी थोड़ा सा 20% स्किल्ड शहजाद साहब कह रहे हैं, ताहिरा कह रही हैं बिगनर्स, दैट्स फाइन। चले हम गुड नॉट एक्सीलेंट, ठीक है फायजा, दैट्स ग्रेट। मीडियम लेवल के लोग हैं, अर्शद साहब है, दैट्स ग्रेट, ठीक है। चले हम यूं करते हैं, इट्स इजी टू सर्च, गजाला कह रही हैं। चले हम कुछ बातें करते हैं गूगल पे आके। अच्छा, मुझे मैंने आपसे कहा कि फैसला ये करना है कि इंफॉर्मेशन चाहिए किस नेचर की। अच्छा, मुझे ये पता करना है कि आज कोविड के जो ओमिक्रॉन है वायरस, उसके पेशेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में कितने हैं। अच्छा, मुझे अब यहाँ फैसला करना है कि क्या मुझे इस पे कोई किताब चाहिए, आर्टिकल चाहिए, क्या चाहिए। न्यूज़ यकीनन मेरे काम की हो सकती है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि ओमिक्रॉन केसेस इन पाकिस्तान। जरा हम देखते हैं ओमिक्रॉन केसेस इन पाकिस्तान। अच्छा, ये जर्नल सर्च है। जर्नल सर्च में आपने जरा फोकस करना है, रिजल्ट्स की तादाद जरा देखनी है कितनी आई है। ये एक बड़ा नंबर है जो रिजल्ट्स की तादाद है। तो अगर मुझे न्यूज़ चाहिए थी तो मैं न्यूज़ के डेटाबेस में क्यों नहीं गई, मैंने ऑल पे क्यों क्लिक रहने दिया? आई शुड गो टू द न्यूज़ सेक्शन। न्यूज़ सेक्शन, आप नंबर ऑफ रिजल्ट्स देखें, रिड्यूस हो गए। जब रिड्यूस हुए तो मैं एग्जैक्टली उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच गई जो मुझे चाहिए थी। ठीक है, ओमिक्रॉन के हवाले से मुझे न्यूज़ चाहिए थी। अल जजीरा, टाइम्स ऑफ इंडिया, डॉन, जियो, जिसने इस मौजू पे कोई न्यूज़ शेयर की है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पहुंच गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि न्यूज़ में चली। अच्छा, मुझे इसी मौजू पे एक प्रेजेंटेशन देनी है तो मैं चाहती हूँ कोई तस्वीर मिल जाए कुछ इसके हवाले से। तो मुझे इनके गूगल के इमेजेस के डेटाबेस में चले जाना चाहिए और मैं उस मौजू से मिलती जुलती इमेजेस जो हैं ये भी कॉन्सेप्ट सर्चिंग करते हैं। तो इमेजेस में जाके मैंने उस मौजू से मिलती जुलती कुछ तस्वीरें देखी
और जो तस्वीर शायद मुझे ज्यादा सूट करे मैं यहाँ से पिक करके उसको अपनी प्रेजेंटेशन का हिस्सा बना लूं। हमने क्या किया, पहले नंबर पे हमने न्यूज चाहिए थी तो न्यूज के डेटाबेस में गए, इमेजेस चाहिए थे तो इमेजेस के डेटाबेस में गए। फर्ज करें मैं कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहती हूँ तो SPSS फॉर बिगनर्स और मैं ऑल पे क्लिक करती हूँ, ये देखिएगा मैं ऑल पे क्लिक करती हूँ तो आप जरा रिजल्ट्स की तादाद देखिए, इसमें वीडियोस, इमेजेस, दुनिया की हर चीज मौजूद है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो वीडियो देखने में था ताकि मैं सीख पाऊं। तो देखिए 92,400 रिजल्ट्स बहुत रिड्यूस हो गए और पर्टिकुलरली बिगनर्स के लिए जो SPSS है वो सामने आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं वीडियोस के डेटाबेस में क्लिक करती तो मैं काफी सारा टाइम और एनर्जी बचा सकती थी एज कंपेयर टू ऑल में जाने के बाद कई किताबें, कई वेबसाइट्स, कई चीजें सामने आ रही। ओके, सो हमने सबसे पहले तो ये सीख लिया कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमने किस डेटाबेस में जाना है। अच्छा, SPSS फॉर बिगनर्स पे किताबें भी मौजूद होंगी, तो मैंने वीडियो नहीं देखनी, मैंने किताबें पढ़नी है तो मुझे मोर में जाके बुक्स पे क्लिक कर देना चाहिए। अब मैं एक ऐसे डेटाबेस की तरफ मूव कर गई हूँ जो सिर्फ किताबों के बारे में है गूगल में। अच्छा, ये देखिए ये पहली किताब SPSS फॉर बिगिनर्स, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू लर्न अबाउट। इसका मतलब ये है कि मुझे किताब मिल गई है। अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे कि फुल टेक्स्ट मिलती है या नहीं, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि मैंने आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी है। तो मैं बुक्स के डेटाबेस में चली जाऊं और बुक्स के डेटाबेस में फर्दर फिल्टर्स हैं कि मुझे सिर्फ 21वीं सदी में छपने वाली किताबें बता दें। मुझे एनी डॉक्यूमेंट में जब गई तो ऑप्शंस थी कि बुक्स चाहिए, मैगजीन्स चाहिए या न्यूज़पेपर। मुझे बुक्स चाहिए। अच्छा जी, फिर ऐसी किताबें जिसका सिर्फ फुल व्यू अवेलेबल है वो चाहिए, शायद बहुत मुश्किल से कुछ निकल आई हैं कुछ प्रोसीडिंग्स, बट शायद रेलिवेंट कम हो जाए। तो इस तरह से मुझे क्या करना चाहिए, अपनी सर्च को स्पेसिफाई करना चाहिए और किताबें सामने आ जाएंगी मेरे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी तक तो हमने डेटाबेसिस पे बात की, ये जरा मैं क्लोज अप दे रही हूँ, देखिएगा। ऑल, आप इस बात से कता नजर कि उसका फॉर्म क्या हो इंफॉर्मेशन की, आप ऑल पे क्लिक कर रहे हो, आपके पास चांसेस हैं कि नंबर बड़ा आए सर्च का और इररेलेवेंट चीजें भी आए। आपको सिर्फ वीडियो चाहिए, नंबर छोटा हो जाएगा, रेलिवेंट चीजें ज्यादा सामने आने के चांसेस हैं। आपको सिर्फ इमेज चाहिए तो इमेज के डेटाबेस में चले जाएं, न्यूज के डेटाबेस में चले जाएं, बुक्स के डेटाबेस में चले जाएं, जो भी आपका रेलिवेंट डेटाबेस है उसमें जाके क्लिक कीजिए। हम क्यों खामखा ऑल में जाके ढेरों हजारों लाखों की तादाद में इंफॉर्मेशन देखें। होता क्या है, ये ह्यूमन बिहेवियर है कि वो आमतौर पे गूगल के दूसरे पेज तक नहीं जाता या तीसरे पेज तक तो नहीं जाता। तो होता क्या है, जब हम स्पेसिफिक सर्च नहीं करते और हम कीवर्ड ठीक नहीं देते तो हम पहले पेज को पढ़ने के बाद अपनी सर्च स्ट्रेटजी चेंज करना चाहते हैं या हम रिवर्स हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन में हम छोड़ देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें अपना सही कीवर्ड और सही डेटाबेस चूज करना चाहिए ताकि हम पहले पेज पे ही मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए। मुझे बताइएगा आप में से कितने लोग हैं जो गूगल के दूसरे, तीसरे या चौथे पेज पे जाते हैं। गूगल कितने लोग हैं जो उसका दूसरा, तीसरा, चौथा पेज पढ़ते हैं? Sometimes, not always, okay. So that's why I'm focusing on, so Bilal, it's good to know कि आप 3-4 पेज ज्यादातर जाती हैं। Moving on till I find my required item, good for my research, sometimes. So it's common behavior, mostly हम नहीं जाते, ये common है, दुनिया में common है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे कि हम मोस्ट रेलिवेंट, क्यों हम एनर्जी और टाइम वेस्ट करें सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जाके, हम मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पहले पेज पे क्यों नहीं लाते। तो हमें लाने के लिए और जो टेक्निक्स यूज करनी है मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। अच्छा, हमने क्या करना है, ये देखिएगा, सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाके मैं इसको थोड़ा सा
एडवांस्ड सर्च में चले जाना है। हमने क्या करना है, एडवांस्ड सर्च में चले जाना। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपने देखना है कि एक सर्च होती है जिसको फ्रेज सर्च कहा जाता है। फ्रेज, अच्छा फ्रेज क्या है, एक जुमला है। मसलन देखिए, मुझे इस बात का कभी यकीन है कि एक जुमला जो मैं लिख रही हूँ ये इसी तरतीब से उस इंफॉर्मेशन में किताब में मौजूद था। मसलन मैं कोई से भी 3 लफ्ज लिखती हूँ, मसलन मैं कहती हूँ एकेडमिक, हमने उस दिन यूज किया था इंटेग्रिटी, और तीसरा जो है वो मैं लिखती हूँ अमंग स्टूडेंट्स। फर्ज करें मुझे चांसेस हैं कि मेरी इंफॉर्मेशन इस ये जुमला तो जरूर मौजूद होगा जब मैं इस मौजू पे इंफॉर्मेशन तलाश करूंगी, तो मैं इसको यहाँ दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज, ये आपको विजिबल है, दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज में जाके ये जुमला लिखूंगी और इस पे डबल कोटेशन मार्क्स लगा दूंगी। ये तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइटल पता होता है, एग्जैक्ट टाइटल पता होता है किसी किताब का, आर्टिकल का, किसी भी चीज का। तो मैंने क्या किया, जुमला लिखा और मैंने उसके साथ डबल कोटेशन मार्क्स लगा दिए, या नहीं भी लगाऊंगी तो जब मैं इस वाली फील्ड में एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज में लिखूंगी तो ये सर्च करके सिर्फ वही चीजें लाएगा जिसमें ये एग्जैक्ट वर्ड या फ्रेज यूज हुआ हो। मैं एडवांस सर्च में चली जाती हूँ, क्लिक किया तो आप गौर कीजिएगा 5550 रिजल्ट्स हैं। अगर मैं इसके ये डबल कोटेशन हटा देती हूँ और जर्नल तौर पे लेती हूँ इस जुमले को, तो आप जरा नंबर ऑफ रिजल्ट्स पे गौर कीजिएगा, तादाद कई सफ़ों पे मुश्तमिल हो गए, बढ़ गए आपके रिजल्ट्स। अच्छा, हुआ इसमें क्या कि जब मैंने इसके डबल कोटेशन हटाए तो इसने हर एक इंडिविजुअल लफ्ज को अलहदा सर्च टर्म बना दिया और आपके लिए ढेर सारे ऐसे रिजल्ट्स ले आया जिसमें इंटेग्रिटी को सेपरेट तौर पर डील किया था, एकेडमिक इंटेग्रिटी को कहीं इकट्ठा डील किया था, कहीं एकेडमिक को सेपरेट, तो तादाद बहुत बढ़ गई। मुझे तो जबकि ये सारे लफ्ज एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर चाहिए थे, तो मैंने क्या किया कि इसीलिए या तो मैं एडवांस सर्च में जाके वहां लिख दूंगी एग्जैक्ट टाइटल की फील्ड में, या यहीं पे अपना जुमला लिख के डबल कोटेशन लगा दूंगी, तो मेरे रिजल्ट्स जो हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, इसको कहते हैं फ्रेज सर्च। फ्रेज सर्च, मुझे बताइएगा इसमें कोई एम्बिग्विटी, स्लाइड्स हैं नहीं, मैं लाइव आपको दिखा रही हूँ काम करके। फायजा, मैं स्लाइड्स नहीं दिखा रही, मैंने गूगल खोला हुआ है और मैं लाइव दिखा रही हूँ आपको। आप लोगों के यहाँ थोड़ा सा मेरा ख्याल है कहीं सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। जो देख पा रहा है मेरी स्क्रीन, प्लीज वो बताइएगा जरा, आप में से कौन है जो देख पा रहा है? Not visible, not visible. Okay, so Mary, we can see though, not visible. Okay. जी, बाकी लोग भी बताइएगा। अभी मैं जो, अगर आपको न्यूज चाहिए तो आपने न्यूज के डेटाबेस पे सर्च करना है, इस मौजू पे ऑल पे नहीं करना। अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो पे, और अगर आपको बुक्स चाहिए तो ये देखिए बुक्स का डेटाबेस है, यानी इसी मौजू पे मैंने बुक्स लिखा तो किताबें सामने आ गई, किताबें सामने आ गई। अच्छा, अब जो मैं चीज आपको समझा रही थी वो बेसिकली ये थी कि यहाँ आप सेटिंग्स में चले जाएं, सेटिंग्स में जाके आप एडवांस्ड सर्च में चले जाएं। एडवांस्ड सर्च के अंदर जब आप जाएंगे, फर्ज करें अब ये बुक है, मैं ऑल पे ले आऊं जरा ताकि जर्नल सर्च आपको सिखा सकूं। अच्छा, आप एडवांस सर्च पे जब जाएंगे तो उसके बाद आपने ये देखें, ये सेकंड फील्ड है जिसमें लिखा है दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज। तो मुझे पूरा जुमला चाहिए था, पूरा जुमला चाहिए था, मुझे चंद हर लफ्ज को सेपरेट नहीं काउंट करना था। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पूरा जुमला मौजूद हो या ये सारे लफ्ज मौजूद हो। तो मैंने किस में फील्ड में एंटर किया, दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज, दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज, और एडवांस सर्च पे क्लिक कर दिया। अब आप जरा रिजल्ट्स की तादाद गौर कर लें, कितनी नजर आ रही है? कोई एक सिर्फ माइक्रोफोन ऑन करे। मैडम कुछ नजर नहीं आ रहा, बस ये लिखा हुआ है एकेडमिक इंटीग्रिटी अमंग स्टडीज अमंग स्टूडेंट्स। ये सर्च
सर्च का रिजल्ट नजर नहीं आ रहा मैडम, वो सिर्फ जहाँ सर्च किया एकेडमिक इंटेग्रिटी, ये जो जुमला लिखा वो सिर्फ नजर आ रही स्क्रीन, ये आगे चल क्यों नहीं रही? सर थोड़ा सा ना मुझे लगता है सिस्टम स्लो है, इंटरनेट का आपके यहाँ कोई मसला है। अच्छा, आप में से कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसको ये रिजल्ट्स की स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैम नहीं नजर आ रही। जी नहीं नजर आ रही। मैम किसी को भी नहीं नजर आ रही हमने से। किसी को नजर नहीं आ रही, ये ओवरऑल ही मसला है जी। मैंने वैसे मैम गूगल की एडवांस सर्च ओपन हुई है, बस स्लो है जी। फिर आपके पास ना सिर्फ सिस्टम थोड़ा 2 मिनट वेट कर लें यहीं पे, ये स्क्रीन अभी नजर आ जाएगी। आप लोगों का इंटरनेट स्लो है, आप जरा वेट कर लें। अभी हम देखते हैं, नहीं हम स्विच नहीं करने लगे, हम वेट कर रहे हैं कि आपकी ये स्क्रीन विजिबल हो जाए। मैडम ये वाला पेज ना पूरा नहीं है नजर आ रहा, साइड पे लफ्ज कटे हुए हैं साइड से ना, कोई पता नहीं क्या वजह। उसको छोड़े सर, अभी आ जाता है, मुझे समझ आ गई है आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो है, वो स्लो चल रहा है सिस्टम, अभी आ जाता है। हो सकता है, आप ठीक अभी है। आ जाता है सर, मैं इसीलिए नहीं, मैं अब कहीं स्विच नहीं कर रही, हम वेट कर रहे हैं। बिलाल साहब अटेंडेंस ही शेयर कर दें प्लीज। ये जो ही आपको रिजल्ट्स नजर आए आपने मुझे बताना है। ओके मैम, ओके। $5,550। ठीक हो गया। अभी मैं ये डबल कोटेशन मार्क्स हटा रही हूँ, डबल कोटेशन मार्क्स हटा रही हूँ। ये देखिए, अब मैं एंटर करती हूँ और जरा अब रिजल्ट्स बताइएगा कितनी तादाद में बढ़ गए? बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब इसने इसको जुमला अब इसने जुमला नहीं लिया, इसने हर एक को इंडिपेंडेंट लफ्ज लिया है। तो अगर आपको किसी चीज का टाइटल पता हो तो आपने क्या करना है, आपने उसको डबल कोटेशन मार्क्स लगा दें या उसको एग्जैक्ट फ्रेज और वर्ड की फील्ड में जाके लिख दें, तो आपको कंपैरेटिवली कम और स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? जी मैम क्लियर। जी क्लियर है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, फिर से एडवांस सर्च पे चले जाते हैं। अब यहां जाके हमने क्या करना है कि ये और करना है कि ये जो इंफॉर्मेशन थी ये हमें किस फॉर्मेट में चाहिए। मैं आपसे ये बात कर रही थी किस फॉर्मेट में चाहिए। तो हम यहाँ पे फाइल टाइप आपको नजर आ रही होगी, एनी फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और अगर मुझे सिर्फ इस मौजू पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं पीपीटी चूज कर लूंगी। ये विजिबल है ना, मैं पीपीटी चूज कर रही हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा विजिबल है। फाइल टाइप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक हो गया। अब मैं चली गई आगे और एडवांस्ड सर्च पे क्लिक कर दिया। अच्छा, रिजल्ट्स देखिएगा कितने हैं? 3030। और करें 3030 फॉर्म में है पीपीटी, ये देखिए, और ये पीपीटी ये देखिए जहां मेरा कर्सर है। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो हर रिजल्ट पीपीटी है। ये देखिए हर रिजल्ट पीपीटी है। आप समझ रहे हैं? अच्छा, अब फर्ज कीजिए मैं पीपीटी को खत्म कर देती हूँ, फाइल टाइप को ये देखिए मैं आपके सामने डिलीट कर रही हूँ, एंटर करती हूँ। अब रिजल्ट्स की तादाद देखिएगा और ये भी नोटिस कीजिएगा कि अब कहीं रिजल्ट्स के सामने पीपीटी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। ये देख रहे हैं आप? मैं चाहे सिंपल यहां लिख भी दूं इसके साथ पीपीटी तो रिजल्ट्स की तादाद बहुत ज्यादा रहेगी और मिक्स रिजल्ट्स आएंगे। कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपीटी
वीडियो, ऑडियो, सिंपल टेक्स्ट, कुछ भी, ठीक है। तो हमने क्या चूज किया है? फाइल टाइप, सेटिंग्स, एडवांस्ड सर्च, और क्या चूज किया है? फाइल टाइप। अब हम क्या चूज, फर्ज करें इसी मौजू पे मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं क्या चूज करूंगी यहां से? पीडीएफ और एडवांस सर्च। अब जरा गौर करिएगा कि सारे रिजल्ट्स पीडीएफ के हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है? पीडीएफ। मैं क्लिक करती हूँ तो ये क्या रिजल्ट निकलेगा? ये रिजल्ट पीडीएफ का निकलेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का नहीं आएगा। ये गौर कर लीजिए, पीडीएफ। ठीक हो गया। मैं वापस जा रही हूँ और मैं अगर फाइल टाइप पीडीएफ खत्म कर दूं बैक स्पेस से, ये देखिए, तो अब रिजल्ट्स की तादाद आप नोटिस कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये रिजल्ट्स की तादाद है। आप गौर कर लीजिए, जो कि फाइल टाइप के साथ बहुत थोड़ी थी और स्पेसिफिक पीडीएफ फाइल आ रही थी। समझ गए? यहां से आप हर तरह की फाइल टाइप चूज कर लें। अच्छा, अब मैं फिर एडवांस सेटिंग में जाती हूँ और मैं आपको एक और चीज समझाने लगी हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुमकिन है कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए और चाहिए वो सर्टेन टाइम पे। मसलन मुझे एक मौजू पे ओमिक्रॉन के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन और पाकिस्तान का लफ्ज भी उसमें हो, लेकिन चाहिए पिछले 24 घंटों की। तो आप जरा गौर करें, यहाँ लिखा है लास्ट अपडेट। मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा, लास्ट अपडेट, एनी टाइम, पास्ट 24 आवर्स। अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी पिछले 24 घंटे की आएगी। मैंने पास्ट 24 आवर्स लगा दिया और आप ये देख लीजिए रिजल्ट्स में पास्ट 24 आवर्स के रिजल्ट आ रहे हैं, और साथ ही मैं कंडीशन न्यूज की लगा देती हूँ। जब ये लगाई तो पिछले 5 घंटे, 4 घंटे, यानी 24 घंटों से पुरानी कोई खबर नजर नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप कि हम क्या करेंगे कि टाइम स्पेसिफिक कर देंगे। टाइम स्पेसिफिक कर दिया हमने, सर्च क्या किया? टाइम स्पेसिफिक कर दी। अच्छा, हम रीजन स्पेसिफिक भी कर सकते हैं यहाँ से। मतलब मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन इंफॉर्मेशन पब्लिश कहाँ से हुई हो, फर्ज करें किस रीजन से हुई हो, मैं यहाँ से चूज कर लेती हूँ। एनी रीजन की बजाय मैं रीजन चूज कर लेती हूँ, जिसमें एशिया है, क्या रखना है हमने। हम चूज कर लेते हैं, सिर्फ पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। अब टाइटल में भी पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया वो लिटरेचर सामने आएगा जो पाकिस्तान से छपा हुआ, ठीक है। ये 21 घंटों पहले की खबर। जी, तो अभी हमने टाइम स्पेसिफाई किया था, अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? रीजन स्पेसिफाई करने की तरफ। किस तरफ बढ़ रहे हैं? रीजन स्पेसिफाई करने की। एडवांस सेटिंग्स, और किस जगह पे हमने जाके बात करनी है? हमने रीजन में जाना है, एडवांस्ड, और हम कहाँ जा रहे हैं? रीजन में। ये देखिए रीजन में क्या लिखा? पाकिस्तान। और हमने क्या किया? रीजन में, और हमने एडवांस सर्च पे क्लिक कर दिया। अब जो इंफॉर्मेशन आएगी कहाँ से आएगी? द न्यूज से, ट्रिब्यून से। अब नहीं आ रही पाकिस्तान से पब्लिश होने के अलावा इंफॉर्मेशन। तो मैंने स्पेसिफाई क्या कर दिया? रीजन। मसलन मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन अफगान पाकिस्तान के बारे में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वही इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान से छपे। तो मैंने क्या किया कि रीजन स्पेसिफाई कर दिया। आई होप कि हम रीजन, टाइम और फाइल टाइप के बारे में क्लियर हो गए हैं।
मुझे प्लीज बता दीजिए। यस इट्स क्लियर है। टाइम और जी फाइल मैम टाइप। क्लियर है। बिल्कुल। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग पीएचडी करना चाहते होंगे, स्कॉलरशिप्स लेना चाहते होंगे, फंडिंग चाहते होंगे। अच्छा, जब हम ऐसी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं ना गूगल से, तो गूगल बाज़ औक़ात हमें गलत साइट्स की तरफ ले जाता है, जो साइट्स रिलायबल नहीं होती। ठीक है, अच्छा हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें डोमेन में रह के सर्च करना। ये प्लीज स्पीकर ऑफ कर दें या माइक्रोफोन अपना ऑफ करें। अच्छा, हमें स्पेसिफिक डोमेन में रहना है। कैसे? मसलन देखिए मैं लिखती हूँ पोस्ट डॉक्टोरल स्कॉलरशिप्स इन मैथमेटिक्स, फर्ज करें, आप जरा गौर कीजिएगा, मैथमेटिक्स, लेकिन मुझे जर्नल इंफॉर्मेशन ना लाके दो। आपको पता है ना .com का मतलब है कमर्शियल, कमर्शियल हो सकता है वो। तो मैंने उसको कहा कि साइट एंड डोमेन .edu। अब .edu किसकी साइट डोमेन होगी? किसी यूनिवर्सिटी की, किसी कॉलेज की, किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की। मैंने जनाब सर्च किया और मैंने कहा कि पोस्ट डॉक्टोरल, इसके साथ एनी टाइम कर देती हूँ, 24 घंटे में कोई नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अब गौर कीजिएगा कि, और मैं एक और काम करती हूँ, अभी हमने रीजन पाकिस्तान किया हुआ था, उसको भी खत्म करते हैं ताकि हमें बाहर की जो है वो सर्च होके। और जनाब हमने रीजन चेंज करना है यहाँ से, क्योंकि अभी हमने रीजन किया था पाकिस्तान। ठीक है, तो हम क्या करने लगे हैं, रीजन यहाँ से एनी रीजन। ये देखिएगा हमने क्या किया, एनी रीजन। ठीक है, ये देखिएगा पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप्स। अब जरा गौर कीजिए कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन आई है। toxicology.org, मुख्तलिफ इदारे आ गए, रिसर्च मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों का आ गया, IMA का आ गया, हार्वर्ड का आ गया, डिफरेंट इलिनॉय यूनिवर्सिटी का आ गया। अब ये जो जितने भी आपको इंफॉर्मेशन आई है, रिलायबल सोर्सेज से आई है, यानी आपको किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आई है। तो हमने क्या किया था, साइट डोमेन जो है वो हमने क्या रखी थी, .edu। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको कोई फाइनेंस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए कि डोमेन क्या रखनी चाहिए, .org। ये क्या होगी, मसलन .org मैं लिखती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ जी पाकिस्तान की फाइनेंशियल, या फाइनेंशियल की बजाय मैं यूज करती हूँ इकोनॉमिक सिचुएशन। अब इकोनॉमिक सिचुएशन पे जो रिलायबल इंफॉर्मेशन आएगी कहाँ से आएगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। तो मैं .gov लिख देती हूँ, गवर्नमेंट .gov। डोमेन क्या है, gov, गवर्नमेंट साइट। आपने गौर करना है कहाँ से आई है इंफॉर्मेशन, NCBI से आई है। ठीक है, पबमेड में पड़ी हुई है। अच्छा जी, अब आगे www.trade.gov। ठीक है, USAID.gov, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन .gov। आई मीन वो सारी इंफॉर्मेशन जो किसी गवर्नमेंटल डोमेन से है वो आपके सामने आएगी, जिस पे रिलाई किया जा सकता है। अब आप रिजल्ट्स की तादाद देखें, 1,57,000 के करीब। अब भी मैं साइट जो खत्म करती हूँ तो आप जरा एक तो रिजल्ट्स देखिएगा, दूसरा देखिएगा .com से कितने रिजल्ट्स आते हैं। ये जी रिजल्ट्स की तादाद चेंज हो गई, और ये देखिए सेकेंड ही रिजल्ट .com से आया है, कमर्शियल सोर्स से आया है, जबकि पहला फिर भी .org से था। तो हमने क्या करना है कि रिलायबल इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम डोमेन्स में रहेंगे। एकेडमिक इंफॉर्मेशन .edu, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन .gov, किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन .org। ठीक है, कमर्शियल पे हम सेकंड लेवल का रिलाय करते हैं, पहले लेवल पे हम अपनी डोमेन में रहना चाहिए हमें, ताकि हम रिलायबल इंफॉर्मेशन ढूंढ सकें और साथ में अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा सकें कि इस इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन में आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढनी है। तो मुझे बताइएगा प्लीज कोई एक माइक्रोफोन ऑन करके कि डोमेन के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लें। क्या आप इसमें क्लियर हैं कि डोमेन सर्च हमें कब करनी चाहिए? यस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो हमने अब तक क्या सीखा, फ्रेज सर्च, रीजन स्पेसिफाई किया, टाइम स्पेसिफाई किया, फाइल टाइप स्पेसिफाई की, और अब हमने डोमेन स्पेसिफाई की। ठीक है,
अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से आप चूज लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। ये देखें अरेबिक है, किसी खास मौजू पे आपको इंफॉर्मेशन अरेबिक में चाहिए, आप तलाश कर लें। ये देखें अब जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये सारे रिसोर्सेज अरेबिक में मौजूद होंगे, ठीक है। कोई ना कोई उसमें इंफॉर्मेशन अरेबिक में होगी तो वो आपको अरेबिक वेबसाइट पे ले जाएगी या अरेबिक में सोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये फ्रेज रिसर्च है ना, उस वक्त आवाज क्लियर नहीं थी, काइंडली इसको एक्सप्लेन कर दें। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ। ये देखिए मैंने पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन के मौजू पे इंफॉर्मेशन लेनी है। फ्रेज होती है कि मेरी इस सर्च को जुमला समझा जाए, एक एक वर्ड पे लहदा ना सर्चिंग की जाए। तो ये जो दूसरी फील्ड है एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज, इस पे मैं क्लिक करके वो जुमला लिख दूंगी जो जुमला मुझे चाहिए। और मैंने क्या किया, एडवांस्ड सर्च पे क्लिक कर दिया। अब आप देखिए कि आपको पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन, आप पहला रिजल्ट देखिए, टाइटल में क्या है, पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन, यानी तीनों लफ्ज यहाँ मौजूद है। अगर आप दूसरा देखें रिजल्ट, दूसरे में भी तीनों लफ्ज मौजूद है। अगर तीसरा देखें तो पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन, ये देखिएगा जरा नीचे, ये देखिए ये इकट्ठे लफ्ज मौजूद है उस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अब सर्च क्या हो गया आया, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जिसके अंदर ये तीनों लफ्ज एक ही डॉक्यूमेंट में। यानी मैडम इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, इस फ्रेज को इन्वर्टेड कॉमा में, यहाँ से डायरेक्ट लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख दे। अगर नहीं भूल जाता है कैसे लिखना था तो एडवांस सर्च में जाके जो फील्ड है एग्जैक्ट फ्रेज वाली, उसमें जाके अपनी सर्च क्वेरी लिख दें। ये देखिए क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया जी। Yes, all is clear. That's great. अच्छा okay, मैम। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गूगल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो एक और चीज होती है आपकी रिसर्च को या सर्चिंग को स्पेसिफाई करती है, वो होती है फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना। अच्छा, मैं आपको वो कहाँ से सिखाऊंगी, अब हम थोड़ा सा HEC के रिसोर्सेज पे कन्वर्ट हो रहे हैं। मसलन ये देखिए मैंने यहाँ लिखा HEC डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। हाँ मैडम, कुछ नहीं विजिबल। लिंक चला गया शायद। लिंक नहीं गया, विजिबल नहीं है। हाँ विजिबल कुछ नहीं हो रहा। जी सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट थी, मैं वापस दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जी, हम शेयर कर रहे थे कि हम HEC डिजिटल लाइब्रेरी लिखेंगे और हमारे पास इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी HEC डिजिटल लाइब्रेरी की। ये देखिए कुछ इस तरह का एक इंटरफेस जो है वो आपके सामने आएगा। HEC डिजिटल लाइब्रेरी का इंटरफेस विजिबल है। जी मैम, विजिबल Yes, it's visible, ma'am. अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने टॉप पे देखे सर्च ऑल HEC इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, इस जगह पे मैंने कोई लफ्ज लिखा, मसलन मैंने लिखा पाकिस्तान और इकोनॉमी, फर्ज करें मैंने लिख दिया, ठीक है। जब मैंने ये लिखा तो उसके बाद मुझे ये नेक्स्ट एक डेटाबेस पे ले गया जो कि समन 2.0 कहलाता है। ये जो समन 2.0 है ये बहुत बड़ा
I think again link has gone. सॉरी, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सिस्टम। आई डोंट नो आज वेदर की वजह से ये क्यों खराब है सिग्नल। सुबह भी हो रहा था वाइल अच्छा सुबह भी था, आज सुबह से प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा हम HEC डिजिटल लाइब्रेरी पे आ गए और ये देखिएगा समन जो है ना अभी लोड हो रहा है। ये बड़ा जबरदस्त रिसोर्स है। मेरी ख्वाहिश होगी अल्लाह करे कि इंटरनेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हम इसको बेहतरीन तरीके से सीख सकें। मैम जिनके लिए मुमकिन है अगर वो अपना लैपटॉप ऑन कर लें तो बहुत आसानी हो जाएगी। मैंने लैपटॉप ऑन कर लिया, आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूँ और जी जी वो पैरेलल आप काम कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी बात है अगर साथ साथ चीजों को देख लिया जाए। अच्छा आपके पास ना दुनिया में दो तरह के अगर मेजर हिस्सों में तकसीम करें ना तो इंफॉर्मेशन सोर्सेज दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। एक होती है आपकी और एक होते हैं सब्सक्राइब्ड या फी बेस्ड। अच्छा फ्री रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अब मौजूद हैं जिसमें गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, जिसमें आपकी रिपोजिटरीज हैं, ओपन एक्सेस मटेरियल है। तो अभी ये जो समन 2.0 ये खुलता है तो हम आप इस पे डिस्कस करते हैं कि इसमें ढेरों फ्री फुल टेक्स्ट इंफॉर्मेशन मौजूद है, सिर्फ आपको सर्चिंग आनी चाहिए। मैम हमारे पास तो जल्दी जल्दी खुल रहा है। आपके पास जल्दी जल्दी खुल रहा है इसका मतलब है कि मेरे पास इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। ठीक है अच्छा जी पाकिस्तान इकोनॉमी आ गया आपके सामने, विजिबल हो गया। रिजल्ट्स पे जरा गौर करना है आपने। 3,40,784 ऐसा ही है जी मैम। ठीक हो गया। अब आप अपने लेफ्ट साइड पे जरा देखिए आपके पास फिल्टर्स हैं। अच्छा फर्ज करें मुझे मेरा इंटरेस्ट ही फुल टेक्स्ट में है तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ से प्लीज अपने माइक ऑफ कर दें, जहां पे फुल टेक्स्ट ऑनलाइन पे क्लिक कर दूंगी। अब जरा आप रिजल्ट्स की तादाद देखिएगा 3,40,782। अच्छा अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कंटेंट टाइप देखते हैं। हमें चाहिए क्या, आर्टिकल चाहिए, कोई थीसिस चाहिए, क्या चाहिए। ये देखें डाइजर्टेशन और थीसिस पे मैं क्लिक करती हूँ। अब देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स कितने रह गए, सिर्फ 13,105। मुझे जब चाहिए थीसिस था तो मुझे क्यों सब पे क्लिक रखना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलती हूँ तो मुझे सिर्फ वो थीसिस चाहिए जो पिछले 5 साल में पब्लिश हुए हैं या किए गए हैं। ले जी 1,744 थीसिस रह गए। अभी भी मैं और स्पेसिफाई कर सकती हूँ। मुझे पाकिस्तान इकोनॉमी के बारे में पता करना है लेकिन सिर्फ वो चीजें जो इंटरनेशनल रिलेशन में छपी हुई हैं, उसके एक मौजू पे छपी हुई हैं। आपको पता है ना पाकिस्तानी इकोनॉमी पे तो इकोनॉमिक्स वाले भी काम करेंगे, फाइनेंस वाले, इस्लामिक इकोनॉमिक्स वाले, मल्टीपल लोग। तो मुझे चाहिए था सिर्फ वो जो इंटरनेशनल रिलेशन पे बात करे। तो रिजल्ट्स कितने बचे, 190। अच्छा मैं और स्पेसिफाई करती हूँ। फर्ज करें मैं यहाँ से चूज कर लेती हूँ कि डेटाबेस कौन सा हो। खैर 190 के 90 प्रोक्वेस्ट में पड़े हुए हैं। लैंग्वेज भी चूज की जा सकती है। मुझे सिर्फ इंग्लिश में चाहिए और लैंग्वेज नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। मेरे कुछ रिजल्ट्स और कम हो गए और 186 टोटल रिजल्ट्स। आप मुझे बताइएगा कि हजारों की बजाय अगर मैं 186 रिजल्ट्स देखने लगूं तो मेरे लिए कंपैरेटिवली बहुत आसान होगा कि मैं सारे रिजल्ट्स को गो थ्रू कर लूं जो रेलिवेंट भी हैं, मेरी जरूरत के मुताबिक भी है। ठीक हो गया। अच्छा यहां तक क्लियर है। लेफ्ट साइड पे आपने क्या किया, फिल्टर्स लगा दिए। क्या किया, फिल्टर पब्लिकेशन डेट के भी लगा दिए, डिसिप्लिन जिसको सब्जेक्ट एरिया कहते हैं उसका भी लगा दिया, सब्जेक्ट टर्म्स का भी बल्कि मैं लगा सकती हूँ इससे आगे। यानी मैं कहूँ कि उसमें सब्जेक्ट टर्म इकोनॉमिक हो। इकोनॉमिक्स जब सब्जेक्ट टर्म लगा दी तो और थोड़े हो गए 24 रिजल्ट्स। तो आपने देखा कि ये कितने रेलिवेंट और मेरी जरूरत के मुताबिक हो गए। अब यहाँ पे शो हो रहा है कि आपके कौन से फिल्टर्स लगे हुए हैं। फुल टेक्स्ट, थीसिस चाहिए था, पिछले 5 साल के चाहिए थे,
इंटरनेशनल रिलेशन के एरिया में काम हुआ हो, इकोनॉमिक्स उसकी सब्जेक्ट टर्म हो और इंग्लिश में। ठीक है, इनको आप 1 बाय 1 क्लियर भी कर सकते हैं, यानी रिमूव कर सकते हैं अगर ब्रॉडर रिजल्ट्स लेने हैं। ये देखिए रिमूव होते चले जाएं। ठीक है, तो अगर ब्रॉडर लेने हैं तो रिमूव कर लें, नैरो लेने हैं तो स्पेसिफाई कर लें। यहाँ तक क्लियर है? यस मैडम। मैम इट्स क्लियर। जबरदस्त। अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम ना थोड़ा सा बुलियन पे बात करेंगे। आपके बहुत सारे सर्च इंजन जो है ना, ये बुलियन ऑपरेटर्स को डील करते हैं। बुलियन ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ये 3 तरह के होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। अच्छा एंड क्या है? एंड ये है कि मुझे ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें पाकिस्तान और इकोनॉमी दोनों लफ्ज मौजूद हों। आमतौर पे सर्च इंजन्स बाय डिफॉल्ट एंड ऐड करते हैं। मसलन अभी हम इसमें एंड ऐड करके देखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं कि क्या रिजल्ट्स चेंज होते हैं। अगर नहीं होते तो इसने एंड ऑटोमेटिकली लगा दिया था, ले जी लगा दिया था। इसकी बजाय अब मैं लिखती हूँ और का मतलब है कि ऐसे डॉक्यूमेंट तलाश करो जिसमें पाकिस्तान का लफ्ज हो या इकोनॉमी का लफ्ज हो। अच्छा अब चांसेस क्या है? रिजल्ट्स नैरो होंगे या ब्रॉडर होंगे? ब्रॉडर होंगे। तो चलें सर्च करके देखते हैं कि अगर मैं और कहूं तो क्या ब्रॉडर हुए हैं? बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, ये कब लगाया जाता है? और का लफ्ज तब लगाया जाता है जब 2 लफ्ज एक ही मतलब को शो करते हो। मसलन मैं कहूं कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, तो मुझे शक है कि बाज डॉक्यूमेंट्स में फाइनेंस लिखा होगा, बाज में इकोनॉमिक्स, दोनों ही मेरे जरूरत के होंगे। तो मैं और का लफ्ज करके ढूंढ लूंगी ताकि कोई चीज मिसिंग ना हो मेरे से। आई होप आप समझ रहे हैं और का इस्तेमाल। अच्छा एक और लफ्ज होता है नॉट। मसलन आप ये देखिए, मैं ये सारे फिल्टर क्लियर कर रही हूँ। मसलन अगर हम ये देखें कि मुझे पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए बट उसमें इंडिया ना आता हो, क्योंकि चांस है ना बहुत सारी जगहों पे जहां पाकिस्तान डिस्कस होता है इंडिया भी होता है। अच्छा मैंने सर्च किया नॉट के बाद में आने वाले जुमला जो है वो हम उसको कह रहे हैं कि नॉट के बाद जो आ रहा है ये सर्च नहीं करना। अच्छा ठीक है, रिजल्ट्स कितने आए जी? 10, 51, 876। अच्छा अगर मैं नॉट हटा दूं, अब इसने इसको एंड लिया है और अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, इंडिया पाकिस्तान। जबकि मैंने जब इसको नॉट कहा था तो पाकिस्तान रिजल्ट्स में आ रहा था, इंडिया नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि आपको पता है कि ये दोनों चीजें एक डॉक्यूमेंट में आ सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं नॉट लगा के उसको एक्सक्लूड कर सकती हूँ। मुझे प्लीज बताइएगा एंड और नॉट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस ओके मैडम जी हो गया। क्लियर मैम। यस मैम। जबरदस्त। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की जरा इन्वॉल्वमेंट। ये एंड वाला दोबारा बता दो। मैं बता देती हूँ प्लीज एंड एंड क्या वाला है। दोबारा बता दो। जी मैं दोबारा एंड क्या है मैं आपको समझाती हूँ। एंड ये है कि फर्ज करें कि मुझे एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके अंदर मुझे पाकिस्तान का लफ्ज भी चाहिए और इंडिया का भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एंड लगा दूंगी। अब क्या होगा कि रिजल्ट्स वही सर्च होके आएंगे जिसमें पाकिस्तान और इंडिया एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्कस हुआ। जबकि अगर मैं एंड ना लगाती तो ये चांस था कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आते जो सिर्फ पाकिस्तान पे बात करते, कुछ ऐसे आते जो सिर्फ इंडिया पे बात करते और कुछ ऐसे आते जो दोनों पे बात करते। तो रिजल्ट क्या निकलता कि अगर 30-30% भी डॉक्यूमेंट तीनों साइड से आते तो 90% डॉक्यूमेंट जमा हो जाते, जबकि मेरी जरूरत तो सिर्फ एंड वाली थी और वो 30% थे। तो मैं क्यों ना एंड लगा दूं और एंड लगा के इसको स्पेसिफाई कर दूं। मैडम मैं आप तक अपना पहुंचा पाई हूँ पैगाम? यस मैम ओके ठीक हो गया। एंड का मतलब ये है कि जब 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आपको एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर चाहिए, यानी इंडिया के बाद मैं एक और एंड लगाती हूँ और मैं कहती हूँ कश्मीर, ये भी रेलिवेंट है ना? आप देखिएगा रिजल्ट्स थोड़े रह गए। क्यों? क्योंकि तीनों एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर कम जगहों पर डिस्कस हुए होंगे।
अच्छा, ये भी हो सकता है पाकिस्तान एंड इंडिया और नॉट कश्मीर कर दूं, फर्ज करूं कश्मीर का जिक्र ना हो, क्योंकि ऐसा मुमकिन है ना तीनों इकट्ठे डिस्कस हुए। अब रिजल्ट्स देखिएगा जरा, इंडिया पाकिस्तान वाले रह गए, कश्मीर वाले एक्सक्लूड हो गए। I hope it is going interesting for you. Yes, ma'am. Interesting. तो यहाँ तक हम क्लियर है? Yes, ma'am. Why do we call them Boolean? Why do? Boolean was the person who suggested this model. उसने कहा कि आपका जो सर्च इंजन है उसमें ये तीनों ऑपरेटर्स मौजूद होने चाहिए ताकि लोगों को ये सहूलत दी जाए कि अगर वो दो टर्म्स को जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ के सर्च कर लें, सेपरेट नॉट करना चाहते हैं तो एक्सक्लूड कर लें, और जब सिनोनिम्स एक जैसे लफ्ज का इम्कान है कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट इस्तेमाल हुए हो तो और इस्तेमाल कर सके। तो बुलियन ने ये सुजेस्ट किया था मॉडल, इसलिए इसको बुलियन सर्चिंग मॉडल या बुलियन सर्चिंग टेक्निक्स कहा जाता है। Okay, ma'am. Thanks. थैंक यू। अच्छा जी, हम थोड़ा आगे चलें, बाकी डेटाबेसेस की तरफ। कुछ और चीजें इंटरेस्टिंग हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो मैं जरा वापस अपनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पे आ रही हूँ। ये है जी बुलियन का कॉन्सेप्ट। क्या था? एंड में पॉवर्टी और क्राइम, ये ग्रे एरिया में जहां जमा होते हैं दोनों टॉपिक, वो वाला डॉक्यूमेंट सामने आए जिसमें दोनों डिस्कस होते हैं। और में ये वाला भी आ जाए और ये वाला, मतलब बहुत डॉक्यूमेंट जमा होने वाले हैं और सर्च ब्रॉडर होने वाली है। यहाँ सर्च क्या हुई है? नैरो। यहाँ भी सर्च क्या हुई है? नैरो, नॉट में। ए वाली सर्च मिल जाए जबकि बी वाली ना आए सामने, तो इसको कहते हैं जी बुलियन ऑपरेटर्स। अच्छा, इसके बाद जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी वो ये था कि एक्चुअली ये मेन सर्चिंग टेक्निक्स हैं जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे हैं, जिनमें से हमने बुलियन ऑपरेटर्स कर लिया। फ्रेज सर्च मैंने आपको करके दिखाई कहाँ? गूगल में। अभी हम वापस समन में भी करके देखते हैं। ये मुख्तलिफ सर्च इंजन्स में अप्लाई होती है। ये देखिए, मैंने इसको खत्म कर दिया और मैंने यहाँ लिखा फाइनेंशियल लिटरेसी इन पाकिस्तान और मैंने सर्च कर लिया। अब जरा गौर कीजिएगा, ये रिजल्ट्स आ गए आपके सामने। मैंने इसके साथ डबल कोटेशन मार्क्स लगा दिए दोनों तरफ, एंटर कर दिया। कितने रिजल्ट्स रह गए? Only 5. ओनली 5। अब ये क्या है? फ्रेज सर्च। ये क्या थी? फ्रेज सर्च। ये हर सर्च इंजन आपको प्रोवाइड करेगा। मैं वापस आती हूँ। बुलियन ऑपरेटर्स हमने कर लिया, फ्रेज सर्च कर लिया। बुलियन ऑपरेटर्स अभी और डेटाबेसेस में भी मैं आपको लगा के देती हूँ। अच्छा, उसके बाद लिमिटिंग सर्च कर लिया। लिमिटिंग कहाँ किया हमने? ये अभी समन में जो ये लेफ्ट साइड के फिल्टर्स यूज किए हैं, इसको कहते हैं सर्च को लिमिट करना या फिल्टर करना। तो हमने 3 तरह की सर्च टेक्निक्स अभी तक सीख ली। बुलियन ऑपरेटर सीख लिए, फ्रेज सर्च सीख ली और फोकसिंग एंड लिमिटिंग अ सर्च सीख ली। ठीक हो गया। अब मैं वापस आती हूँ एचईसी रिसोर्सेज पे और हम क्या करेंगे कि ये देखिए, ये ई डेटाबेसेस के अंदर हम क्लिक करेंगे। प्लीज अपने माइक्रोफोन बात करने के बाद बंद कर दिया कीजिए। अच्छा, हम डेटाबेसेस में आ गए। हम आपके फील्ड्स में कोशिश करते हैं एक एक डेटाबेस हर फील्ड से ले लें, यानी हर डिसिप्लिन से ले लें। तो सोशल साइंसेज के अंदर हमारे पास या मैनेजमेंट साइंसेज में एमराल्ड एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें आपकी मैक्सिमम जरूरत की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला यूआरएल है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो एमराल्ड का डेटाबेस खुल जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि एमराल्ड में भी फ्रेज सर्च को अप्लाई करके देखें और बुलियन को अप्लाई करके देखें। तो मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ लिखूंगी, फर्ज करें हमने लिखा फाइनेंशियल लिटरेसी और पाकिस्तान, लिख देते हैं। अच्छा जी, रिजल्ट्स पे आपने गौर करना है। कितने रिजल्ट्स हैं जनाब? ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ। कितने रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं?
आई होप मेरी आवाज आ रही है। कितने रिजल्ट्स सामने स्क्रीन पे विजिबल हैं जी? जी जी जहीर बाबर साहब, आप प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑन करके बताइएगा मुझे। इसका मतलब है कि मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। मैम स्क्रीन नजर आ रही है, हमारे माइक्रोफोन्स डिसेबल्ड थे। अच्छा, ओवर कितने ओवर रिजल्ट्स हैं 1000 मैडम? रिजल्ट्स, ओवर 1000 रिजल्ट्स। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं ये करने जा रही हूँ कि इसमें एंड का ऑपरेटर लगा रही हूँ, एंड का ऑपरेटर लगा रही हूँ। ये देखिए, इसने 1000 रिजल्ट्स ही दिए हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि उसने ऑटोमेटिकली एंड का ऑपरेटर लगाया है, एंड का ऑपरेटर लगाया है। अब मैं इसमें कोई एक ऑपरेटर चेंज करती हूँ। मैं इसमें लिखती हूँ और नहीं बल्कि नॉट पाकिस्तान। अब देखिएगा, नॉट पाकिस्तान ये नहीं ले रहा। मुझे क्या करना चाहिए? एडवांस सर्च में जाना चाहिए और यहाँ लिखना चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉट पाकिस्तान, ऑल फील्ड्स एड रो नॉट, यहाँ से चूज कर लें। वो डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान। और अब अगर आपको एंड अप्लाई ना हो या और ना हो तो आपने एडवांस सर्च में चले जाना है। एडवांस सर्च में जाके वहां से ये देखिए, एडवांस सर्च आपके सामने है, वहां पहला हर्फ या पहला टर्म लिखनी है, फिर नॉट एंड और में से कोई चूज करना है, दूसरी लफ्ज या टर्म लिखनी है और सर्च कर देना। सर्च कर देना, ये सर्च कर दिया मैंने। सर्च करने के बाद रिजल्ट्स कितने आए ये देखिए। पहले कितने रिजल्ट्स थे? 1000 के करीब 1,40,000 बढ़ गए। अब ज्यादा हो गए अब हम मैडम, फिर से बढ़ वापस गए। जाते हैं और हम एक काम करते हैं, हम वहां से एडवांस जी हाँ बढ़ गए हैं ना, मैं बताती हूँ। अभी हम एंड यूज करते हैं। अब आप देखिएगा, हम वापस आते हैं। अब कितने रह गए? एंड से 9000 स्पेसिफाई हो गए ना, ये सिर्फ पाकिस्तान वाला चाहिए था तो 9000 रह गए। ठीक है, अब हम फिर एडवांस सर्च पे जाते हैं और यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या अब और का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और इकोनॉमिक्स, और हम देखते हैं कि और के साथ ये कितने रिजल्ट्स देते हैं। 1,69,000। अगर मैं ये और हटा दूं और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और इकोनॉमिक्स रहने दूं जैसे हम आमतौर पे कीवर्ड्स में करते हैं, तो आप गौर कीजिएगा 80,000 रिजल्ट्स। ठीक है, और से क्या हुआ था? ब्रॉडर हुए थे। अब ब्रॉडर नहीं हुए तो चांस जो था इंफॉर्मेशन मिलने का वो यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, तो एंड क्या करता है? नैरो। नॉट क्या करता है? नैरो कंपैरेटिव। मैम साउंड नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नो पिक्चर, ड्रॉप कर दिया। स्लाइड्स भी Neither sound nor neither audio nor video. Both are Don't worry, don't worry, I'm here please.
Okay, it's visible now. So हम एक और डेटाबेस में इसको प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और वो यस अब और वो डेटाबेस है JSTOR. आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन बट आपको पता है हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, सिग्नल्स आते जाते हैं. ओके, सो JSTOR पे हम क्लिक कर रहे हैं. ये आमतौर पे ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स में बड़ा इस्तेमाल होता है. मैं इसकी भी एडवांस सर्च में आपको कुछ चीजें सिखाऊंगी, आपके लिए ये बहुत काम आएंगी. मैं पूरी स्ट्रगल कर रही हूँ कि आपको ये चीजें मैं लाइव डेमोस्ट्रेट कर दूं. को एक और चीज को ट्राई करेंगे. उस सर्च को कहते हैं प्रॉक्सिमिटी सर्च. प्रॉक्सिमिटी अपने लफ्ज से जाहिर है तकरीबन, यानी आप ये गौर कीजिए कि आपने दो लफ्ज सर्च करने हैं, इंडिया और पाकिस्तान. एक डॉक्यूमेंट 300 सफ़ों का है, उसमें इंडिया पहले सफ़े पे है और पाकिस्तान आखिरी सफ़े पे है. तो आपने जब इंडिया एंड पाकिस्तान लगाया तो कभी इम्कान है कि वो डॉक्यूमेंट सर्च होके आए, लेकिन आपके शायद किसी काम का ना हो. इंडिया और पाकिस्तान इतना दूर दूर डिस्कस हुए हैं कि इम्कान है कि आपके मौजू के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. तो हम ऐसे वक्त में प्रॉक्सिमिटी सर्च लगाते हैं कि लफ्ज एक दूसरे से करीब तरीन कितने हो. हमने कहाँ क्लिक करना है? एडवांस सर्च में. कहाँ क्लिक करना है? एडवांस सर्च में. यहां जाके ये देखिए हमने यहाँ पे पहला लफ्ज लिखा, मसलन हमने लिखा इंडिया, दूसरा एंड लिखा पाकिस्तान, और आगे शर्त लगा दी इस बात की कि ये एक दूसरे के करीब हों. कितना करीब हों? मैं कहती हूँ ये हर 5 लफ्ज के बाद एक दूसरे के करीब हों. ठीक है, और मैंने इसको सबमिट कर दिया. अब हम जरा सर्च रिजल्ट्स देखते हैं. 60,045 रिजल्ट्स मेरे पास विजिबल है. आप गौर कीजिएगा, इंडिया और पाकिस्तान 5 लफ्जों के दरमियान एक दूसरे के करीब है. गौर कर लें, हाईलाइट हुआ होगा. अगर मैं 5 की बजाय यहाँ 10 लफ्जों में इसको कह दूं तो रिजल्ट्स नैरो होंगे या ब्रॉडर होंगे? ब्रॉडर होंगे. नैरो होंगे. नहीं सर, 10 लफ्जों में देखें मेरी बात सुनें. ब्रॉडर इसलिए होंगे कि मैंने उसको बड़ा टारगेट दे दिया ना कि 10 लफ्जों में कहीं मौजूद हो. अच्छा अच्छा, यस 10 लफ्ज. नैरो 5 में होने देना. नैरो 5 में होने देना. ब्रॉडर हो. ब्रॉडर वो ब्रॉडर हो जाएगा. ब्रॉडर हो गया. ओके. अच्छा, अब अभी हम जो वहां पे भी स्टडी कर रहे थे फिल्टर और लिमिट सर्च करने का, यहाँ पे भी आपके ये साइड रिजल्ट्स में लिमिट हो जाता है. सिर्फ जर्नल चाहिए, रिजल्ट्स कम हो जाएंगे. उनमें से सिर्फ फर्ज करें कोई और लिमिट लगा देते हैं डेट की. इसको रेंज सर्च कहते हैं. मैं उसको कहती हूँ कि जनाब आप मुझे 2010 से 2020 के दरमियान रिजल्ट्स दे दें और नैरो हो जाएंगे. इसको कहते हैं रेंज, टाइम रेंज सर्च. ये हर डेटाबेस में आपको चीजें मिलेंगी. आपकी लेफ्ट साइड पे आमतौर पे होंगी. सब्जेक्ट एरिया डिटरमिन कर लें. एग्रीकल्चर में इंडिया और पाकिस्तान 36 रिजल्ट्स रह गए. ठीक है, मैं फिर एडवांस सर्च पे वापस जाती हूँ ताकि हम एक दफा फिर इसको समझ सकें. ये देखिए, यहाँ क्लिक करके बुलियंस की ऑप्शंस भी हैं और नियर 5, 10 और 25 तक ये आपको सर्च करेगा. जब मैंने 25 तक किया तो रिजल्ट्स और ब्रॉडर होने के चांसेस हैं. ब्रॉडर हो जाएंगे. हो गए 77,000, जो कि पहले शायद ज्यादा हो गए. ठीक है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी सर्च. ठीक है, अच्छा, ताकि लफ्ज करीब करीब होंगे तो चांस है कि हमारे मौजू के मुताबिक चीजें मिलें. ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और चीज है जो आपने ज़हन में रखनी है. कभी कभार आपको पता है ना, कुछ स्टेम वर्ड्स होते हैं. मसलन मैं यहाँ लिखती हूँ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी से और लफ्ज आप में से कोई साइकोलॉजी से होगा यकीनन. मुझे बताएं साइकोलॉजी के अलावा कौन से लफ्ज इस स्टेम वर्ड से बन सकते हैं जितना मैंने लिखा है?
साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल, साइकिक, साइकैट्रिस्ट बन सकता है, साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। तो अब मुझे जब साइकोलॉजी के बारे में चीजें ढूंढनी है तो मुमकिन है कि सिर्फ साइकोलॉजी लिखूं तो साइकोलॉजिस्ट इग्नोर हो जाए, साइकैट्रिस्ट इग्नोर हो जाए। तो मैं क्या करूंगी कि जो मिलता जुलता स्टेम वर्ड है वो लिखने के बाद यहाँ पे स्टेरिक लगा दूंगी। अब गौर कीजिएगा, मैं एंटर कर रही हूँ। अब रिजल्ट्स में आपने गौर करना है। सबसे पहले गौर करें, साइकोलॉजिकल हाईलाइट हुआ है, साइकोलॉजिस्ट के रिजल्ट्स भी आ गए हैं, साइकैट्रिक के भी आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करें इसकी बजाय अब रिजल्ट्स की तादाद पे भी फोकस कर लें, 1,38,000, चलें हम साइकोलॉजी लिखते हैं सिंपल, 96,000, मतलब साइकोलॉजिकल मिसिंग हो गया, साइकैट्रिस्ट मिसिंग हो गया, साइकोलॉजिस्ट मिसिंग हो गया। कौन से रिजल्ट्स आए? जिनमें सिर्फ लफ्ज साइकोलॉजी। देखिए ना, ये सिस्टम मैच करता है ना, मैचिंग पे बेस कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि साइकोलॉजी में सिर्फ स्टेम वर्ड रहने दिया और स्टेरिक लगा दिया, तो रिजल्ट सारी तरह के आ गए मेरे पास। मुझे आप ये बताइएगा कि ये चीजें स्पेसिफाई कर रही हैं ना आपके रिजल्ट्स को, और इम्कान बढ़ा रही हैं कि तमाम चीजें सर्च हो के हैं। मैडम इसको और भी स्पेसिफिक कर सकते हैं, जैसे हम कहें कि साइकोलॉजी एज अ टर्म। देखिए, साइकोलॉजी एज अ टर्म मैं आपको बताती हूँ, उसके लिए आपने क्या करना है। मैंने ये खत्म कर दिया और आपने एडवांस सर्च में चले जाना है। एडवांस सर्च में जाके आपने यहाँ पे लिखना है लव्स साइकोलॉजी, और यहाँ से चूज कर लेना है कि वो कहाँ पाया जाता हो, कहाँ पाया जाता हो। टाइटल में, अब इम्कान है ना टाइटल में टर्म के तौर पे पाया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से चूज कर लें कि जी टाइटल में ही हो सिर्फ, ठीक है। उसके बाद एक और ऐड कर लें रो, और एंड फर्ज करें कोई और चीज ऐड करनी है तो यहाँ से ऐड करते जाएं, ठीक है। तो वो स्पेसिफाई इस तरह कर सकते हैं। ये जे स्टोर में भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी ऑप्शन है, एडवांस्ड में चले जाएं आप, और आप यहाँ लिखें कीवर्ड साइकोलॉजी, और यहाँ से आपने चूज करना है कि क्या टाइटल में हो, कैप्शन हो। ये जो कैप्शन होता है ना, ये टर्म होती है, सब्जेक्ट हेडिंग होती है, ये टर्म होती है, इसमें सर्च। तो सर्च करेंगे तो आमतौर पे जिसको सब्जेक्ट हेडिंग या टर्म असाइन की होगी साइकोलॉजी की, वो सर्च होके आएगा। ओके मैडम, थैंक यू। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, हम वापस आते हैं जरा, मैं आपको कुछ और चीज भी बताना चाहती हूँ। अच्छा, इसी तरह आप ये गौर करें कि आप लिखते हैं चाइल्ड एक स्टेम वर्ड है। अच्छा, इसके साथ चाइल्डिश भी हो सकता है, चाइल्ड लाइक भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं ना। तो मैं चाइल्ड के साथ स्टेरिक लगाऊं तो इम्कान है कि चिल्ड्रन भी सर्च होके आ जाए। अब मैं हर तरह की बार बार सर्च करके लहदा ना देखूं, एक ही बार चाइल्ड के साथ स्टेरिक लगा दूं, तो आप गौर करें, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक, मल्टीपल आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, स्टेम वर्ड यूज करना है और स्टेरिक लगाना है। अच्छा, इसी तरह आप ये देखें कि आप एक सर्च कर रहे हैं और आप लिख रहे हैं वुमेन, जबकि इम्कान है कि विमेन जमा में भी आया होगा। तो जो जिस हर्फ के सिमिलर होने का इम्कान है उसकी जगह स्टेरिक लगा दें। तो अब ये वुमेन भी सर्च करके लाएगा और विमेन भी। जी बताइए। जी मैडम प्लीज, ये जब हम स्टेम वर्ड देंगे आगे स्टेरिक लगाएंगे, तो वो उसके उस स्टेम वर्ड के साथ सारा कुछ ले आएगा, नाउन भी, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब वगैरह वगैरह। तो हम इसको मजीद स्पेसिफाई कर सकते हैं स्टेरिक के बाद के एडजेक्टिव वाले ले आए या एडवर्ब वाले या कुछ इस तरह का? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं। ये तब इस्तेमाल करते हैं जब इस बात का इम्कान हो कि कोई चीज रह ना जाए। आप समझें कि हम एक्चुअली इसको ब्रॉडर कर रहे हैं। अच्छा, कोई चीज रह ना जाए। ओके, थैंक यू। अभी मैंने ये वुमेन कहा ना आपको, तो अगर किसी ने वुमेन को सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल किया हो या प्लूरल के तौर पे, तो मैंने क्या किया कि ई जो था उसमें फर्क हो सकता था ना, ए आ सकता था यहाँ या ई, तो मैंने वहां स्टेरिक लगा दिया। अब ये दोनों को सर्च करके ओके, ठीक हो गया। इसी तरह मैं एक और मिसाल देती हूँ। आपको पता है कलर और कलर में फर्क होता है स्पेलिंग्स में।
CULOUR और Yes. CULUR। तो Yes. मैंने क्या किया कि Yes. जितने सिमिलर थे वो लिख दिए और जो जिनका इम्कान था डिफरेंट होने का वहां स्टैरिक लगा दिया। ये आपके सामने। अब सर्च किया, अब दोनों तरह का जो कलर है इनके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स पाए जाएंगे वो दोनों तरह के कलर और कलर को डील करेगा, यानी कोई किसी तरह होगा कोई किसी तरह। तो रिजल्ट क्या निकला कि आप यस, ये स्टैरिक जी, ये स्टैरिक जहां लगाएंगे वहां सारे अमकानात ले आएगा। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। ठीक है, मसलन मैम आप ये ये स्टैरिक देखिए कहाँ से लगाना है? कहाँ से लगाना है, आपने शिफ्ट दबाना है और आमतौर पे आपका जो 8 नंबर की होती है जिसपे 8 लिखा होता है उसके ऊपर स्टैरिक का निशान बना होता है। शिफ्ट के साथ स्टैरिक होता है। मोबाइल में आपके सिंबल्स का वो आता है ना, सिंबल्स आते हैं ना जहाँ से ऐट लगाते हो, ऐट वहां है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अब ये देखिए मैंने शुरू में कभी कभी स्टेम की बजाय लास्ट वर्ड्स आपके सिमिलर होते हैं, मसलन मैनेजमेंट, एस्टेब्लिशमेंट और बहुत सारे। तो आखिरी जो मिलते जुलते लफ्ज हैं अगर मैं लगा दूं और उससे पहले स्टैरिक लगा दूं तो आप देखिएगा मल्टीपल चीजें सामने आएंगी। डेवलपमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट, कंटेंटमेंट, ये मैं सिर्फ मिसालें इसलिए दे रही हूँ कि आप अपने स्पेसिफिक आप अपने स्पेसिफिक केस में देख लें कि आपको ये कहाँ लगाना है स्टैरिक। माइक्रोफोन अगर 1 by 1 ऑन करे तो मेरे जी आपका किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है, मैं बल्कि चैट बॉक्स भी खोल रही हूँ। हम तकरीबन हमारा वक्त। अच्छा मैडम, एक सवाल ये है कि हमें ये तो सर्चिंग तो पता चल गई ना, मतलब किस तरह अवॉइड कर रहे हैं सारा, तो कोई ऐसा टूल है जिससे ये पता चले कौन सी साइट कितनी रिलायबल है, या मतलब इस तरीके से कोई है ऐसा? जी वो इन्होंने बताया था ना कि मुख्तलिफ हैं, गवर्नमेंट की हैं, जैसे अगर कोई पता करनी हो। जी सिर्फ मैंने आपको सोशल जो है साइट की रिलायबिलिटी बताई कि ये जो जितने भी डेटाबेसेस जी डेटाबेस से मतलब को आप करेंगे ना क्लिक, ये पब्लिशर्स इसके जिम्मेदार हैं, ये रिलायबल इंफॉर्मेशन है। फिर दूसरा मैंने बताया कि अगर पब्लिशर्स के डेटाबेसेस पे आप नहीं जाते तो जनरल साइट्स में .org रिलायबल है, जो है edu रिलायबल है, .gov रिलायबल है, जबकि .com पे आपको फर्दर चेक्स लगाने पड़ते हैं। .com में कुछ रिलायबल है कुछ नहीं रिलायबल। तो .com जब आपको नजर आए कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, .com से आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं फर्दर चेक कर लूं कि कौन लिख रहा है, सोर्स क्या है और बहुत सारी चीजें, और क्रॉस वेरीफाई कर लूं। ठीक है, जबकि अगर कोई पब्लिशर किसी चीज को दे रहा है तो वो हमारे लिए रिलायबल है। मसलन ये HEC के डेरो डेटाबेसेस जो मैंने आपके सामने खोले, ये सब रिलायबल हैं इसलिए कि पब्लिशर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंफॉर्मेशन। जी बहुत शुक्रिया, जी समझ आ गई। जी कोई और सवाल है तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम मैडम ये सलाम। मैं जिसके साथ सोया बात कर रही हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर है, प्लीज इसका आप शेयर कर दीजिए। लिंक शेयर, ये रिकॉर्डेड है, PHEC आपके साथ शेयर कर देगी। मैम आपका पहला लेक्चर भी हम तक नहीं पहुंचा। ये हाँ मैडम वो बिलाल साहब सुन रहे होंगे, मैं इंटरेस्ट बिलाल साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ वो प्लीज इनके साथ शेयर कर दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग बिलाल साहब कर रहे होंगे, मेरे पास एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं होती। जी थैंक यू। जी वो पहला लेक्चर भी बहुत बेहतरीन था और बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ दिलचस्प भी था और हमें बहुत मजा आया था। लेकिन बिलाल साहब कह रहे थे कि आपने उन तक शेयर नहीं शायद किया, तो इस वजह से नहीं हम तक पहुंचा अभी तक। उसकी पीपीटीज मैंने नहीं शेयर की थी, आज बिलाल साहब ने रिक्वेस्ट कर दिया है, मैं उसकी पीपीटीज भेज दूंगी, वो आपको शेयर कर देंगे। जी लेकिन रिकॉर्डिंग जो है वो बिलाल साहब के पास मौजूद होगी। मैं इंशाल्लाह हर तरह की कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार हूँ। मेरा ये ईमेल जो है ये आप नोटिस कर लीजिए, अगर किसी को कोई जरूरत पड़े। ये देखिए ये मेरा ईमेल है,
ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर दें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, एक जो है और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, आपने जहन में रखना है कि जिस इंफॉर्मेशन के साथ ओपन एक्सेस आ जाएगा वो आपको फुल टेक्स्ट अवेलेबल है। ये देखिए, ये जरा गौर कीजिए, ओपन एक्सेस, ये आपको कहीं से, घर से कहीं से भी फुल टेक्स्ट अवेलेबल है। मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ कि पीडीएफ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये फुल टेक्स्ट मुझे पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। ये देखिए, समन में भी ढेरों फुल टेक्स्ट अवेलेबल है। ये मैं जे स्टोर में वापस जाती हूँ, यहाँ से भी मैं यहाँ से चूज कर लूंगी, सॉरी मैं चूज कर लूंगी ओपन एक्सेस। ये देखिए, एक्सेस टाइप पे क्लिक करूंगी जब मैं, कंटेंट आई एक्सेस, इसका मतलब है ऐसे ऐसे कंटेंट्स जो कि मुझे एक्सेस करने की इजाजत है। ऑल कंटेंट्स आ रहा है इस वक्त, इसमें वो कह रहा है कि कैप्शन आपने सर्च किया हुआ है इसलिए शायद ये नहीं दे रहा। मैं दोबारा से साइकोलॉजी का लव लिख के सर्च करती हूँ और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कंटेंट टाइप चूज कर लेते हैं, कंटेंट आई हैव एक्सेस। अब ये जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एक्सेप्ट एंड डाउनलोड। अब ये आपको फुल टेक्स्ट अवेलेबल है। तो कभी आपको फर्ज करें कि कोई ऐसी चीज जो फुल टेक्स्ट अवेलेबल फिल वक्त ना हो, तो आप उस मौजू पे ओपन एक्सेस तो हर सूरत। यहाँ पे 4 बज गए हैं, मैं अपना लेक्चर कंक्लूड करती हूँ। मुझे आपके पास कोई सवाल है तो मैं अवेलेबल हूँ, मेरे पास वक्त है, आप लोग अपने क्वेश्चंस अगर जहन में है तो पूछ सकते हैं। हाँ बन गया, सही है। लेकिन तुम इसे नीचे करके थोड़ा माथे ज्यादा पता, नीचे जगह बढ़ रही है सर। तो नीचे एक सवाल आपसे करना था जी। जी, माइक्रोफोन ऑफ है शायद आपका। जी। मैंने ये कहा कि जैसे आपने बताया कि कुछ कीवर्ड्स हम इंग्लिश में यूज करते हैं तो हमारी एक्सेस हो जाती है मुख्तलिफ तरीकों से और उसके रिजल्ट्स भी मुख्तलिफ रहते हैं। अगर हमने उर्दू में कोई चीज हमने करनी हो सर्च, तो उसके लिए भी क्या यही तरीका कार होगा? जी, आप अंग्रेजी में लिख के लेकिन लैंग्वेज उर्दू कर दें सर्चिंग में। मैंने जैसे गूगल में आपको बताया, एडवांस सर्च में जाके लैंग्वेज उर्दू कर दें। कीवर्ड्स वो होता क्या है मैं आपको समझाती हूँ। उर्दू के मजमून में जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी छापते हैं, पब्लिश करते हैं मकाला, तो उस मकाले का एब्स्ट्रैक्ट इंग्लिश में होता है ना, और कलीदी अल्फाज भी अंग्रेजी में भी होते हैं। होता क्या है कि सिस्टम के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो अंग्रेजी में हो जाती है, लेकिन जो लिंक होता है उसके साथ पेपर वो उर्दू वाला हो जाता है। तो आप चाहे अंग्रेजी में लिखें या रोमन में लिखें, लेकिन वो मैच हो जाएगा आपके उर्दू वाले कंटेंट के साथ। और सिर्फ लैंग्वेज में जाके चूज कर लें कि मुझे उर्दू में चाहिए, तो उसमें सिर्फ वही चीजों से सर्च हो जाएगा जहां लैंग्वेज उर्दू होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।